Hello, hello.
ಹಲೋ 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 ಅತ್ತವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ದಯಮಾಲ್ತು ಪೂರೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಚ್ಚಿದಾಡೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯಮಾಲ್ತು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದಯಮಾಲ್ತದ್ದು ಪಿಚ್ಚಿದಾಡೆ ಬರೋಡು ಆಲ್ರೆಡಿ 10-20 ಆ್ಯಂಡ್ ದಯಮಾಲ್ತು ಮಾತ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಲ ಪಿಚ್ಚಿದಾಡ ನಡುಕು ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಬುಲ್ಸ್ SKB ಕಿನ್ನ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅರಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಮಾತ ಟೀಮ್ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದಯಮಾಲ್ತು ಎದುರು ಬಲಿ ಪಿರ ಪಿರ ಕುಲ್ಲುಂಡ ನನ್ನ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಎನ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯರುಂಡು ಒಕ್ಕ ನಮಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ದಯಮಾಲ್ತು ಎದುರು ಬಲಿ ಮಾತ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಲ ದಯಮಾಲ್ತು ಎದು ಬರಲಿ ಟೀಮ್ SKB ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಅರಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಿನ್ನ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮಾತ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಲ ಎದುರು ಬಲಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬಲಿ 10:30 ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಪಿಚ್ಚಿದ ಎದುರು ಬರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ದಯಮಾಲ್ತು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಸರ್ Satish sir, please requested to come to the commentary box. Satish Salian sir. SKB ಸುರುತ ಮ್ಯಾಚ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಯಮಾಲ್ತು ಬಲೆ ದಯಮಾಲ್ತು ಎದುರು ಬಲೆ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಇವ್ರನ್ನ ಟೀಮನ್ನು ದಯಮಾಲ್ತು ತೊಂಬಲೆ ಎದುರು ಅತ್ತವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ದ ಮಾತ ಟೀಮ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದಯಮಾಲ್ತು ಎದುರು ಬಲಿ ದಯಮಾಲ್ತು ಪಿಚ್ಚಿದ ನಾಡಕು ಆಯ್ನಾತ್ತು ಬೇಗ ಬಲಿ ನಿಕುಲು ಏತ್ ಲೇಟ್ ಮಲ್ತಾರ ನಮಕ್ಕೆ ಬಂಗಾಪಿ ನಮ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಡ್ ನಡಪಾದು ಗೊರೋಡು ನಿಕುಲು ಏತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಆತು ನಮಕ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಸುರುತ್ತ ದಿನಟ ಎನ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯರುಂಡು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬಲಿ ಟೀಮ್ SKB ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಗುಡ್ಡೆ ಬುಲ್ಸ್ ಅರಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಿನ್ನ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಏತ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇ ದಯಮಲ್ತ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಎದುರು ಬರೋಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಪೈರ್ಸ್లో లేరు ಒಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಪೂರ లేరు ಅದೇ ರೀತಿ APL ಅತ್ತಾವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಸೀಸನ್ 7 14ನೇ ವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅತ್ತಾವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಸೀಸನ್ 7 ಈ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್
ಇವರು ಸಾದರಪಡಿಸುವಂಥ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅತ್ತಾವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಸೀಸನ್ 7 ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪಿಚ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಗಣ್ಯಾತಿಥಿಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಿಚ್ನ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಪಿಚ್ನ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತದನಂತರ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಅಥವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಸೀಸನ್ 7ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಂಥ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟು ಸರ್ ಹಾಗೆ ಸುರೇಶ್ ಬಿದ್ರೆ ಇವರ ಗಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ರೋಲನ್ ಪಿಂಟು ಸರ್ ಅವರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂಥ ಗುಡ್ ಡೇ ಬುಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ SKB ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟು ಸರ್, ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಹಿರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾದಂತಹ ಅನುಭವಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಇದೀಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿಯಾದಂತಹ ಕೋಟೆದ ಬೊಬ್ಬಸ್ವಾಮಿ ದೈವವನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಮಂಗಳದೇವಿ, ಮಾರಿಗುಡಿ, ಹಳಕೋಟೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ. 2 ದಿವಸ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಥವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಸೀಸನ್ 7ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿದಂಥ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ವಿನಾಯಕನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ. ಗುಡ್ಡೆ ಬುಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SKB ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೊದಲನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ 2 ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯ. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂಥ 5 ತಂಡದ ನಾಯಕರು, ಮಾಲಕರು ದಯಮಾಡಿ ಪಿಚ್ನ ಮಧ್ಯೆ ತೆರಳಿ. ರೋಲನ್ ಪಿಂಟು ಸರ್ ಅವರು ತಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್, ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿವರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ನಾಯಕರು, ಮಾಲಕರು ಪಿಚ್ನ ಬಳಿ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಇದೀಗ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಲಾಘನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗುಡ್ಡೆ ಬುಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ SKB ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. 5 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅತ್ತವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 7 ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗುಡ್ಡೆ ಬುಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SKB ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಗುಡ್ಡೆ ಬುಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ SKB ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು.
Welcome back once again for the match number one, the inaugural match between Good Day Bulls versus SKB Cricketers. The winning toss captain of SKB, they elected to ball first, and the first over going to start from the road end. The bowler brought into attack to bowl the first over. Here comes the next delivery. Vaitam over the kitty balls. Nicely driven into the mid-on. They're going for the quick single. And with that single, the score now moves on to the first run, in fact, for the team Good Day Bulls, one without loss of any wicket. A lovely delivery, beautifully bowled, perfect one in the negation, just outside the line of off stump. And batsman just tried to get that one in the offside region, missed it completely. The no run scored. Here comes the next delivery. The outside line of off stump going to be a wide, one more extra with that extra scope, and moves on to two on the board, two for two on the board, two for no loss. Again outside the off stump, too far, one more wide. The bowler really struggling to get his line and length. And the bowler Ajay fails to get the start what they really wanted for the team SBC. Winning the toss, selected to field first. But so far extras which is helping the team Good Day Bulls. Ball him, clean him up, excellent delivery coming into the batter. Akshay absolutely has got no clue whatsoever. Coming into him, a huge gap between bat and pad. After that, the wide deliveries, he just got that one into the batters, and the wicket back in the pavilion. The first wicket gone of Good Day Bulls. It's 3 for 1. Okay.
The first over completed after completion of first over. 3 on the board, 3 for the loss of 1 wicket. The wicket of Akshay is back in the pavilion. The very excellent stuff there from Ajay. All the runs which is coming in the form of extras. Dhanush brought into attack to bowl the second over. And in front of him, the batter Kishan, the experienced campaigner. The new batter already occupied the crease in the non-striker's end. Avinash. Kishan to face his first delivery. Dhanush. Will go into bowl right arm over the wicket. Outside and off stump. Lovely delivery to start with. The fantastic one out just outside the line of off stump. No run scored. The good line to ball. The very good start. Decent start there from Dhanush. Concentrating that line which is just outside the line of off stump. Again, plays it nicely into the fan region, going for the quick single. Good understanding between the wicket. The fielder down at short, extra cover. Mid-off fielder have to move to his left to field the ball. Ample time for batter to complete the single. With that single, score moves on to 4 on the board for the loss of 1 wicket. Here comes next delivery. This time going for the quick single, risky one. But both the batter has got hesitation, leg by call by umpire with the deck leg by Skuban Mazan to 5 on the board. Wide outside the leg stump and going to be a one more extra. With that extra score, but moves on to 6 on the board. 6 for here comes next delivery. Loft hit into the long off. Chance for the feed. Oh, misjudgment. It's absolutely overrun there by the fielder at deep long off, almost charging to the ball. And it's going to be a boundary. The first boundary of this prestigious Attavara Premier League. Total misjudgment by the fielder in the deep long on. What could be a certain catch because of the misjudgment ball into the deep long off boundary for 4 runs. With that boundary, Skubana moves on to 10 on the board, double figure, 10 for 1. Last couple of deliveries left.
Dhanush ball down the leg side, going to be a one more perfect delivery just outside the line of leg stump. They wanted to get that one in the onside region, missed it completely, no run scored. This time lofted, and that will go into a maximum. The first sixer of the tournament. What a tremendous strike just outside the line of leg stump, and Kishan hit that one right from the middle of the bat. The boundary and a six. The first boundary, first six, which is came from the bat of Kishan of this Attavara Premier League 2026 Season 7. Very useful runs came from this over. "16 on the board, 16 for the loss of 1 wicket. ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಂಕೇತ್ ಇವರ ಸ್ಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಜ್ಯೂಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Kiran brought in the attack. He wanted to go for across the line, deflected from his leg, and no run. One more run. Leg by call by umpire. With that leg by scored Namozan to 17 on the board, because of the previous over is a very expensive from Dhanush. So good Bulls up to a very good start in the second over. After that, lost the wicket of Akshay in the first over. Lishan lofted, chance for the fielder at deep long on. That's the end of Kishan. He just wanted to get that one into the deep long on region, couldn't manage to get the distance. The fielder in the deep long on region making no mistake at all. But a very good innings from Kishan, which is comes in, and small cameo from him. It's a 17 for the loss of 2 wicket. He scored a valuable runs from his bat. 12 runs from his bat. Six and a boundary. The first sixer of the tournament, first boundary of the tournament from the bat of Kishan. New batter in is Puneet, one more experienced campaigner. Going to face Kishan. And a bit of disturbance behind the stump and, by Sunil. The full toss and pulls that one down to square leg region for a single. With that single scope, now they wanted to come back a second. Oh my goodness, this opportunity which is created for the run out. Very lucky indeed. They are quickly going back, otherwise asking for trouble. Avinash. A total misunderstanding between the wicket and scoreboard Namuzan to 18 on the board for 2 wickets. And Avinash with the jersey number 99, Avinash, the batter, will go into face Kiran.
Swings and missed. Lovely delivery, just passes around the legs of the batter. And with its scoreboard now moves on to 18 on the board. Dot delivery. Fifth time in this over. It's turning out to be a good over. Wicket taking and quiet over. The economical over is in progress. Avinash places nicely into the extra cover region for a walkable single. With that single scoreboard now moves on to 19 in the over number 3 in progress. Hall. 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 Outside the non-black stump, and going to be a wide plus 1 run, and a couple of runs added to total. With a couple of runs scored, moves on to 20. 21 on the board, 21 for 2 wicket. Here comes next delivery. They played it gently down to point region for a single. With the addition of that single score, moves on to 22. Over number 3 gone. It's a lovely over. The tidy over in the wicket taking over, which is comes in end of Kiran. After completion of over number 3, it's 22 on the board. The fourth over going to start from the far end. The bowler brought into attack to bowl the fourth over. Ravi. Avinash the striker. Short fine leg, square leg, deep square leg in front of square, mid wicket long on. Long off. Deep extra cover. The fielders on the deep. Wanted to stop the ball, missed it completely. Wicketkeeper also missed it. By call by umpire. One more extra. With the addition of that extra by scoreboard numbers on to 23. 23 for the loss of 3 wickets. So 1 by 1 declared behind the stump. Here comes Ravi again to Avinash. Again, lovely delivery coming into the batters. The wicketkeeper behind the stump. Sunil did the rest, back to bowler. That's a very good comeback by ex-KB's cricketers. The last couple of overs, they really managed to tight the things with the excellent line and length. This time chipped it away, lovely shot, what a timing. Fantastic timing stroke there from Avinash. Off the toes, flicks it away, and it's not a big ground, and Avinash easily cleared the man at square leg for a maximum. With that 6 scope numbers under 29 on the board for the loss of 2 wickets. 2, 6 and the boundary so far in the innings of Good Day Bulls. Once again, wanted to swing that one into the 5-leg region. One more addition. The one more addition, score moves on to 30 on the board, declared area.
Avinash got a bat onto that in the last moment. And the 30 is the score now. A good score on the board. There's a couple of deliveries left in this over. This penultimate over number 4 is in progress. Ravi. Balled him, cleaned him up. The good comeback here by the bowler Ravi. Avinash just wanted to go for one more big shot on the mid-wicket region. You miss high it, disturb the furniture. The one more wicket back in the pavilion of Bulls. It's 30 for the loss of 3 wicket. The very good innings of Avinash Vijay comes to an end. So good innings of Avinash which comes to an end. The new batter in is Prasad. And DJ Lara. The man in good form. The previous day, yesterday, played a good innings for the team BFC Attavara at UCG Cricket Ground. Man in good nick will going to face Ravi. Final time in this over. To Lara. Reverse sweep. Played it down to short. But chance of run, it is gone. So looking for the blind run. No response came from Puneet. Is out for duck. The first ball dismissal here for Prasad. Total misunderstanding between the wicket. He wanted to go for the reverse sweep, but ball went straight to the hands of fielder. The Puneet rightly so not responded. Otherwise, he's in trouble. One more wicket gone. It's 4th wicket gone. Prasad departs. Mushad, the new batter in. Musad is a new batter in. The bowler brought into attack to bowl last over. Ashmit. Ashmit, the new young talent. Ashmit round the wicket to Puneet. Deep square leg, deep mid wicket, deep long on, deep long up, deep cover point. Ashmit to Puneet, lofted down nicely into the mid wicket region, but not more than a single. With the addition of that single, Skoban moves on to 31 for 4. So 31 for 4. Outside the off stump and going to be a wide, one more extra. With the addition of that extra, Skoban moves on to 32 on the board. 32 for 3 wickets. This time chance for the fielder to take the catch and he drops it. A difficult one for the fielder at mid-off. One more addition to total addition of that single score, but moves on to 33 for 4. The last 4 deliveries left. 3 deliveries left in this over. Puneet back on strike. Big striker of the ball. Swings and miss. Ashmit, the young man, so far did a great job in this last over. Time exceeds. The fielding team have to bring one fielder inside the ring. Not more than 4 fielders outside the circle.
And here comes Ashmit to Puneet. Puneet lofted straight down the ground. Again, they're looking for second. Wide throw came from the field. A couple of runs completed. Good running beneath the wicket. With that couple of runs scored, moves on to 35 for 4. The last delivery of the innings of Good Day Bulls will go into commence. The good score on the board. Last couple of deliveries. Couple of deliveries left. Ashmit to Puneet. Again, the wide outside the line of off stamp. One more extra, 36. Ashmit, the young man, is really struggling to get his line and length. As the ball far away outside the line of off stamp. This time driven firmly down to long on. Again, they're looking for second. The very good running beat of the wicket, especially the Mossad, is running towards the dangerous end and completes a single. Couple of runs. With that couple of runs, Kobarna moves on to 38 on the board. Last delivery of the innings is coming up. 38, the good score on the board for the Good Day Bulls. Puneet. Again, a nice demand down to the square leg boundary for 4 runs. Lovely finish for the innings. Puneet has played an excellent innings for his team and standing tall in the other end. And very important runs came in this last over from the bat of Puneet. And 42, 43 will be the target. And wait and see how well the team SKB will going to get this 42. Lovely hand there from Puneet. And in the beginning, Kishan scored some runs. And altogether, it's a lovely cricket. Even Avinash is contributed from the back. 43 is the target for 43 target for the team SKB cricketers to win this match. We'll take a short break in commentary box. After a short break, my friend Gopi will go to take on the microphone. Thank you.
सुनील एंड शिव प्रसाद फर्स्ट बॉल ऑफ साइड द ऑफ स्टंप और इस बीच नो बॉल का इशारा और नो बॉल के इस रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका। 1 डिक्लेयर्ड, 1+1 2 runs, 1 no ball and 1 declared short third man. फ्री हिट डिलीवरी फॉर द बैट्समैन। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त फ्री हिट गेंद का, तो देखते हैं यहाँ पर ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। और सुनील जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार। ये गेंद बॉल्ड जस्ट गॉन फॉर लॉट बट दैट इज एन एब्सोल्युटली फ्री हिट डिलीवरी एंड बिकॉज ऑफ दैट द बैट्समैन सर्वाइव्ड एंड द स्कोर स्टेज एट 2-3 for the loss of 1 wicket. Lucky escape for the batsman सुनील। और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। मुशाद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और सुनील जो कि इस वक्त सामना करते हुए मुशाद की गेंदों का, और मुशाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट और गेंद कवर पॉइंट सी मारेगा जब बाहर 4 रनों के लिए। सुनील के बल्ले से चौका लग चुका है। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को स्कूप किया था इनफील्ड क्लियर करते हुए और आखिरकार चौका प्राप्त करने में सफल। और इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 7 without loss in the over number first in progress. 43 the target for SKB Cricketers set by Good Day Bulls. And 7 runs on the board yet to lose any wicket in the over number first in progress. इस बार बल्ले का बाहरी किनारा थर्ड बैन की दिशा में गेंद निकल चुकी है। 1 रन का इजाफा, 1 declared and with that single run the scoreboard moving up to 8 on the board in the over number first in progress. और गेंदबाज नौशाद मुशाद कहना पड़ेगा ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, चूंकि गेंद सीधे शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों में पहुंची, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। The scoreboard stays at 8 without loss in the over number first in progress. और ये गेंद चिप किया खूबसूरती के साथ इन फ्रंट ऑफ द कमेंटेटर बॉक्स, स्टैंड फॉर अ बाउंड्री। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त खेलते हुए बल्लेबाज और बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर देते हुए। 2 fours for Sunil and the scoreboard is now moving up to 12 without loss. Last ball in this over is now coming up. Right arm over the wicket. The bowler bowls मुशाद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और सुनील वाइड का इशारा। इस बीच ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका। कुल मिलाकर 13 रनों पर 13 on the board. Yet to lose any wicket in the over number first in progress. इस बार खूबसूरत fantastic start, 3 fours in a over, and this is an absolutely outstanding start for SKB Cricketers. All because of Sunil, who hit 3 boundaries in this over. 17 runs came from the first over, and this is an absolutely fantastic start for them. Just 26 runs more now they have to score for victory, remaining 24 deliveries। और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाज इस वक्त तैयार और बल्लेबाज सामना करते हुए इस वक्त शिव प्रसाद। पुनीत इस वक्त गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए, शिव प्रसाद जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त पुनीत गेंदबाजी करते हुए शिव प्रसाद के लिए।
दूसरा ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ। अत्तावर प्रीमियर लीग सीजन 7 2026 इज नाउ प्रोग्रेसिंग इन दिस ब्यूटीफुल एमए के क्रिकेट ग्राउंड। और जहां तक सवाल है इस वक्त पहला मैच इस वक्त प्रगति पर कुड्डे बुल्स और एसकेबी क्रिकेटर्स के बीच। पुनीत ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार शिव प्रसाद के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। फर्स्ट बॉल ऑफ द सेकंड ओवर ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। हियर ही बॉल्स। इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया। गेंद पहुंची इस वक्त स्लिम डाउन पर। जब तक गेंदबाज गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर। 18 without loss in the over number second in progress. Now the man Sunil who hit 3 boundaries in the previous over is now going to face पुनीत। और पुनीत इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। Reverse shot delicately played down to a third man for a single, and with that single run the scoreboard moving up to 19 runs on the board in the over number second in progress. Good progressing here for SKB cricketers. Sunil sweep karna chaha, not connected that one properly. Oh, slight bit of misjudgment there, and the batsman come back for the second run before that. The runs added to the total. It's 21 without loss in the over number second in progress. Leg by घोषित करते हुए अंपायर और लेग बाय 21 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर। 21 विदाउट लॉस। गेंदबाज पुनीत इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। गुड डिलीवरी दिस टाइम द बॉल वेंट ओवर द फेंस फॉर अ सिंगल। वन डिक्लेयर्ड इट। स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 23 नाउ, 22 नाउ फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट। और पुनीत अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार गेंद को खेल दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट कवर पॉइंट पर। एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। 23 ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಿ ಹಾಗೂ ಅರಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಿ versus Arasu Warriors. The next match play will be played in between these two teams. Chipped away down to long on. Fielder after it, it just got a single. और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर। 24 without loss after the completion of 2 overs. 7 runs came from the over of Puneet. 2 overs gone, and after 2 overs still I must say SKB cricketers looking in a commanding situation. It's 24 for none after 2 overs. प्रज्वल इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और तीसरा ओवर शुरू होता हुआ उनकी पारी में। शिव प्रसाद जो कि सामना करने के लिए तैयार। थर्ड ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स। फर्स्ट बॉल इज नॉट कमिंग अप और शिव प्रसाद जो कि इस वक्त सामना करते हुए प्रज्वल की गेंदों का दाहिने हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद और गेंद को छोड़ दिया। इस वक्त रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका है
24 रनों पर बिना किसी नुकसान के 24 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज प्रज्वल फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट तैयार। Bowled him, just gone to work it away on the onside, not succeeded. ऑफ स्टंप उखड़ कर गिरता हुआ और आखिरकार शिव प्रसाद की पारी पर पर्दा गिर चुका है। बेहतर गेंद इस वक्त प्रज्वल की, आखिरकार वो विकेट यहाँ पर प्राप्त करते हुए। फर्स्ट विकेट गॉन, 24 for 1 for SKB cricketers. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಿ ಹಾಗೂ ಅರಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಿ ಹಾಗೂ ಅರಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. निहाल, the new batsman is now comes out to the middle और इस वक्त तो सामना करेंगे गेंदबाज प्रज्वल के ओवर की अगली गेंद का। दाहिने हाथों पर द विकेट तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद थर्ड मैन पर वन डिक्लेयर्ड और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 25 रनों पर 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और प्रज्वल एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट तैयार। सुनील सामना करते हुए, निहाल माफ कीजिए, सामना करते हुए। प्रज्वल अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। इस वक्त इस बार बेहतर स्ट्रोक जरूर निहाल का, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। शॉट एक्स्ट्रा कवर पर रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर बोर्ड स्टेज at 25 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Good comeback made by the bowlers of Good Day Bulls. After conceding 17 runs from the first over, they come back very well. Second and the third over, conceding just 8 runs from 9 deliveries. Or Sadi off stump, good one, beaten completely by that pace. And collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. 25 for the loss of no wicket. प्रज्वल अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। Here it comes, right arm over the wicket, bowls. निहाल सामना करते हुए प्रज्वल की गेंदों का। फुल टॉस लेग स्टंप से बाहर और बाई का इशारा, और बाई के इस रन के साथ ओवर नंबर 3 has been game and 3 gone out of 3 overs. It's 26 for 1. Fantastic comeback made by the bowlers of Good Day Bulls after being conceding 17 runs from the first over. They come back very well, conceding just 9 runs in the next 2 overs from Puneet and Prajwal. 12 balls left, 17 runs required. 17 रन चाहिए 12 गेंदों पर विजय के लिए, एसकेबी क्रिकेटर्स के लिए। सचिन द बॉलर स्टार्ट्स फ्रेश प्रोसीडिंग्स और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, सामना करते हुए इस वक्त सुनील। 70 to get from 12 deliveries for SKB cricketers. फर्स्ट बॉल पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट, lofted and this time it fell short of a fielder. In fact, misjudgment made by the fielder at long off, and because of that he just conceded a boundary. गेंद उनके सिर के ऊपर से गुजरते हुए और चौका यहाँ पर प्राप्त करते हुए बल्लेबाज सुनील। लकी बाउंड्री
caught by Sunil, and the scoreboard moving up to 30 now with that boundary. $30 on the board और गेंदबाज इस वक्त तैयार है बाएं हाथ राउंड द विकेट और साथ ही ऑफ स्टंप down to a third man for a single, and with that single run the scoreboard moving up to 31 now. 31 for the loss of 1 wicket. Now just 12 to get from remaining 10 balls. और इस भी सचिन अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा, और इस वाइड के साथ ऐसा कहना पड़ेगा समीकरण काफ़ी हद तक आसान बन चुका है इस वक्त। और सचिन ऑन साइड पर पुल किया खूबसूरती के साथ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग सी मारेगा जब बाहर, गेंद जा चुकी है 4 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक सुनील के बल्ले से लगता हुआ इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 36 रनों पर। 36 for 1, 7 runs to get for victory in remaining 9 balls. 12 runs conceded by the bowler Sachin in this over. Lofted again, he finds the gap and it might be cast off just inside the fence, and the batsman come back for the second run before that. Couple of runs added to the total. 38 for 1 now. Just 5 to get for victory in remaining 8 balls. The things getting much easier for the batting side in this situation. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಿ ಹಾಗೂ ಅರಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. I'm just gone for my team, not succeeded. Single run added. That single run, the scoreboard moving up to 39 for the loss of 1 wicket. Still a ball left in this over. एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट मैंगलोर मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है जनाब कमल अहमद के सारथ्य में। ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, गेंद को उछालने के प्रयास में चूके और जब तक गेंद तक का फील्डर पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 40 for the loss of 1 wicket. 3 runs to get from last over. So the bowler starts a fresh proceedings. अंतिम ओवर शुरू होता हुआ 3 रन चाहिए अंतिम ओवर में विजय के लिए, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार ऋत्विक। गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए सुनील is batting on 24 including 5 boundaries. Is now going to face Hrithik. Swept well, finds the gap as well, and now it's crossed. They come back for the second, in fact. Couple of runs added to the total, in fact. Just we have to wait for the umpire decision. Only a single, one declared it. And the side total is now moving up to 41 for the loss of 1 wicket. In the 5th, the last over started just short while ago in their innings. और गेंदबाज ऋत्विक अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट. Over the wicket, lofted, straight to fielder at mid-on. So fantastic innings of Sunil came to an end of 24 runs he scored.
including 5 boundaries, and is backing to pavilion, playing a good knock for the side. Brothers B ಹಾಗೂ ಅರಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. "25 runs scored by Sunil. Fantastic inning came to an end from him. And the first wicket, second wicket lost for SKB cricketers. It's 41 for 2. Arasu cricketers are won the toss in the next match. और जहाँ तक सवाल है नए बल्लेबाज न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल. 5 balls left, 2 runs required. और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. Four balls left, 2 runs required. Full toss, chipped away down to misjudgment, and it's gone. In fact, he stopped, but the batsman got a important couple of runs. So that's it for this match number 1. And Good Day SKP cricketers registered victory by 8 wickets against Good Day Bulls in the inaugural match of this prestigious cricket tournament, Attavara Premier League Season 7 2026. Second match, Brothers B will take over Arasu Warriors, and that match is now coming up exclusively right in front of you. और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने पूछ देंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर मैच नंबर 2 की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद.
Welcome back once again for the match number 2, and the match number 2 between team Brothers B versus Arasu Warriors. And winning the toss, captain of Arasu Warriors, they elected to ball first, and just opening batters for the team Brothers already there. They made their way to the middle of the pitch with two right-hand batsmen. Manikanta, the non-striker. The striker will going to take the strike. The bowler brought into attack to bowl the first ball from the road end. Here comes the first ball. Right over the kitty balls. Lofted and just over the head of that extra cover field. The protection has been given in the deep in the extra cover region. Just a single. Ajay is off the mark with a single. Again, lovely delivery just coming into the batter. Wilson, the bowler. The bowling is second delivery. Umpire has got no clue. The bowler came right in front of umpire. We'll go into our third umpire to watch. So wide delivery call from the third umpire. So Wilson bowls the wide, and with that extra scored Namuzan to 2 on the board for no loss. Manikanta with the jersey number 28 will go into face Wilson. White arm over the wicket, he bowls. Drives that one, going for the quick single, chance of run out in the non-striker's end, and the Manikanta so quickly responding that run and completes the run very quickly. One more single. With that single scope, and moves on to 3 on the board for no loss. This time across the line, swings it hard, and one bounce collected by the fielder in the deep mid-wicket region, and ample time for batter to complete the couple of runs for Brothers Babagudda. With that couple of runs, Kobana moves on to 5 on the board for no loss. Wilson. Wow, lovely delivery. The good line in the irrigation just outside the line of off stump. At last moment, the ball has got extra bounce. The wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Score remains on 5 on the board for no loss. Wilson Tajai, loose stroke, chance for the fielder at mid-on. And 2 fielders absolutely going to the ball, but very confusion for the scorer because which name he need to enter, because both the fielders are together getting their 2 hands to that ball, but one of the fielders takes the catch. One coming from the mid-wicket completes the catch. Wicket number first gone. Ajay departs. Wilson got a vital breakthrough for his team. Arasu Warriors. Brothers Babagudda have lost their first wicket at the score of 5 on the board for the loss of 1 wicket. New batter, jersey number 45. Latish.
The new batter in Latish. Lovely delivery outside the run of off stump. Beautifully bowled. Excellent over there from Wilson. Wicket taking over as well. And just 5 runs came from this over. Good start from the bowler. And winning the toss, selected to field first. Arasu Warriors after a very decent start. It's 5 for 1. A lot of discussion is going on here in the middle of with the captains and bowlers will going to bowl the second over. "20 minutes which is given for the team to complete their 5 overs quota. Bowler with the jersey number 04 brought into attack. Danu brought into attack to bowl the second over. He will go into ball right arm over the wicket to the left-hand batter Manikanta. Again, lovely delivery just outside the run of off attempt, going for the extra cover try. Misses the line completely. Wicket keeper behind the stump did the rest, back to bowler. Excellent stuff there from Danu. To start with a very good delivery. Once again, this time wicket keeper missed it. The ball went into the declared area and leg by called by umpire. Deflected from the leg of Manikanta. Lucky run. With that lucky run score, but moves on to 6 on the board for 1 wicket. The over number second in progress. Short back point, deep cow point, fielder at long off. Swings and there's some chance of run out and throw which is not up to the mark there from short fine leg field. Just a single. Manikanta maybe has got bat onto that in the last moment. 7 on the board for 1 wicket in the over number. The second is in progress. The bright and sunny morning, and time is now the afternoon, 12 o'clock. The match number 2 in progress. Played it nicely into the deep long on. The one more single. With the addition of that single score, but now moves on to 8 on the board for 1 wicket. Left and right combination. Latish and Manikanta, the batters are in the middle, try to get partnership going. They played it nicely into the deep long on. And one more single. The protection which is given in the deep in the onside region. 3 protection. 9 for 1. Last time in this over. Done balls. Swings and miss. Wicket keeper done a wonderful job behind the stump, but not the result for him. Great over which is comes in, and one more good over from the point of view of team Arasu Warriors, which is comes in end of Danu. And the team searching for the right track. Brothers Babu Gudda are 9 for 1. Last 3 overs remaining. The bowler brought into attack to bowl the third over. Jersey number 10 is in action. Rakshi, the very good bowler, Rakshit. Took out a very good season in the last Attavara Premier Season 6, which is played in Ekuru ground. Man did a lovely job in bowling department. He will go into ball right arm over the wicket. First umpire Suresh Mudabidre to the left hand batter. Swings and miss. Lovely delivery to start with.
One more single down to fine leg region. And Skoba Namuzan to double figure 10 on the board. Again, they wanted to get that one on the onside region. They're going for the single. They're looking for second, and they managed. Good running with the wicket. There is no fielder in the square leg. It's the fielder in the square leg which is in front of square. Plenty of time for the batter to complete the couple of runs. With it, couple of runs, Kobat moves on to 12 on the board for 1 wicket. Rakshit. Oh, beautifully ball once again coming into the batter, deflected from the leg. Leg by call by umpire Suresh Mudavidre. Kobat moves on to 13. For 1, and that brings Latish into strike now. Pushing and running, and this is a good cricket and intelligent cricket there from Latish, because it's not an easy delivery of Rakshit, which is almost in the middle and off stump, and just a soft hand comes into play to rotate the strike. At least the batter wanted to rotate the strike, even they are not getting big runs. Swings and missed. Beautifully bowled. You miss it. Manikanta departs. Rakshit strikes. I already mentioned he's an excellent bowler for the side of Aros Warriors, who can bowl both in and outgoing deliveries within one action. Absolutely perfect stuff there from Rakshit. The wicket number 2 gone. After completion of over number 3, it's 14 for the loss of 2 wicket. And the batter back in the pavilion, Manikanta, after scoring 3 runs, is back in the hut. The new bowler in is Akhtar with the jersey number 7. Akhtar to balls to Sonu, the bowler. And this a full toss, full sit away, down to the square leg. 1 bounce collected by the fielder, and no ball called by umpire, because it was above the waist level, above the chest level in fact, and no ball called by umpire. The free hit delivery for the batter. Free hit delivery. Bowled him, cleaned him up, but the free hit delivery. The batter survived. By call by umpire. The ball after hitting the stump, and rightly so. Sonal the bowler, and just survived from again
wide call by umpire. 1+1, the couple of runs added to total. With that couple of runs scored, moves on to 19 on the board. 19. This time again, let it. Oh, chance of run out, and umpire has got some hesitation there. The out is a call by umpire. Is gone. Unfortunately, the batter, Latish, the batter, back in the pavilion in the form of a run out. The new batter coming to the middle with the jersey number 13 for brothers Babu Gudda. Jersey number 13, Munna. Munna and Dion, the new batters out there in the middle. Two fresh legs. This time one declared by umpire. The by call by umpire, one more extra. Scored moves on to 20 on the board. They're going for a couple of runs very quickly. Good running beneath the wicket. Here comes Sonal. Oh, wicket keep. This time intelligently played it down to short third man region for a single. And Munna picked up a single. Scored moves on to 23 on the board. Munna and Abhiram slowly they wanted to get the partnership for the team brothers Babu Gudda against Arasu Warriors. One more dot delivery. Over number 4 completed after completion of 4 overs. Brothers Babu Gudda are 23 for the loss of 3 wickets. 23 for 3. Just under 4 runs per over. The last over going to start. Looks like the experienced Arun will go into ball the last over. Wait and see. Not Arun. Just number 23 for Arasu will go into ball the last over. Nazir. Lakish the bowler to bowl the last over. Outside and off stump and going to be a single in the declared area. The batter will go to retain the strike. Just a number 01. Munna got a single there. With that single scored, moves on to 24 for loss of 3 wickets. Far outside now off stump and going to be a wide. They're going for the extra run. Chance of run out. And it looks like the batsmen just have made it. And wide call by umpire. 1+1, the couple of runs added to total. With that couple of runs scored, moves on to 26 on the board. 26 for the loss of 3 wickets. The last over is in progress. The bowler
Lakesh is really struggling to get his line and length. Very important runs are coming in this last over. One plus ball, it's a wide plus one bonus run for the team. Again, wanted to go for the drive, missed it completely. No run scored. The very important dot ball. Lakesh bowls. One more single added to total. Abhiram off the strike, and now the batter Munna back on strike. 27 on the board. Lakesh down the leg side, going for the quick single chance of not in non-strikers, and he just misses the throw. By call by umpire. One more extra. With the addition of that extra scope, and moves on to 28 on the board for 3 wickets. Last couple of deliveries left in the innings of brothers. Once again down the leg side, the wicketkeeper missed it. By call by umpire. With the addition of that extra scope, and moves on to 30 on the board. 29. One ball remaining. And Lakesh will go into ball the last delivery of their innings. This time stumped out. I think it's a run out. It's a run out. The batsman is back in the pavilion. The non-striker. So 29 is the score and 30 is the target. 30 is the target for the Arasu Warriors to win this match. So good bowling performance from Arasu Warriors to restrict their opposition for just 29 runs, and they set a target of 30 to win the match for Arasu Warriors by brothers Babu Gudda. And wait and see how Arasu Warriors will going to get this target of 30 balls, 30 runs. The runs required to win this match. We'll take a short break in commentary box. After a short break, my friend Gopi will going to take over the microphone. Thank you. ಕಿನ್ನ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ SKB ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿನ್ನ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ and SKB cricketers, please report to the stage immediately for the toss procedure and also for the signature procedure in the official chart. धन्यवाद सतीश. और अरसू वॉरियर्स के लिए इस वक्त लक्ष्य है 30 रनों का. 30 द टारगेट फॉर देम. देयर इनिंग्स नाउ गोइंग टू स्टार्ट. विल्सन और अक्षित आरंभिक बल्लेबाज.
First ball outside the offside. This could be in trouble. The no striker and लेकिन अंतिम अक्षर में रन पूरा करने में सफल. जोखिम भरा रन था, लेकिन आखिरकार थोड़ी सी हिचकिचाहट के बावजूद इस वक्त एक रन प्राप्त करने में सफल. और इस एक रन के 7 रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका. डियोन गेंदबाजी संभाल चुके हैं और अक्षित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. मैच नंबर 2 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अत्तावर प्रीमियर लीग सीजन 7 2026 इज नाउ प्रोग्रेसिंग ईयर. और इस बीच डियोन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार अक्षित के लिए. पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर यह गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ. मच स्ट्रेटर लाइन फ्रॉम द बॉलर and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. इस बीच डियोन दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. अक्षित सामना करने के लिए तैयार. Good one. Just gone for a love, not succeeded and collected by the short fine leg fielder. और जहां तक रनों का सवाल है, रन्स नहीं मिलेगा. स्कोर रुक चुका है, एक रन बिना किसी नुकसान के. ठीक है, 30 रनों की दरकार अरसू वॉरियर्स के लिए. ब्रदर्स बाबू को गड्ढा के खिलाड़ियों ने तय किया है. Bowled him. Just gone for a loft and the ball struck to his middle off stump. Akshit departs and a first wicket gone for Harasu Warriors. Now they are 1 for the loss of 1 wicket. Kinna Warriors ಹಾಗೂ SKB ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಿನ್ನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ಹಾಗೂ SKB ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಕಿನ್ನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ SKB ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. तो नए बल्लेबाज नंबर 3 बल्लेबाज धनु इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ. लंगोन सीमा रेखा के बाहर गेंद हो चुकी है 4 रनों के लिए. और जहां तक सवाल है, फाइव ऑन द बोर्ड. और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, और गेंदबाज अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिना तो ओवर द विकेट ड्राइव कर दिया इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में. रन इस वक्त नहीं मिलेंगे. स्कोर रुक चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के. और पहला ओवर समाप्त हो चुका. फर्स्ट ओवर हैज बीन केम टू एन एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर Arasu Warriors chasing the victory target of 30 which set by Brothers B. They made a steady start, in fact 5 runs for the loss of 1 wicket they scored after their completion of first over. ब्रिजेश गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए. और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाजी का, तो विल्सन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. 25 रन्स टू गेट इन रिमेनिंग 18, in fact 25 runs to get remaining 24 deliveries. और ब्रिजेश ने मुन्ना गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए. पहली गेंद लेकर तैयार विल्सन, जो कि इस वक्त सामना करते हुए. इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई. 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन भी मिलेगा. इस वक्त गेंद को जब तक फील्ड करके थ्रो करे फील्डर, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. सो आई थिंक कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल. और 2 रनों के साथ
स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर 7 इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। मुन्ना गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट तैयार। Left side. This time Ati finds the gap. No, in fact, fielder out there long off. Just a single he got. सिर्फ एक मात्र रन मिलेगा और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर। 8 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। और मुन्ना गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहा इस वक्त धनु के लिए। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद लेकर तैयार रहा। इस बीच शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची और जहाँ तक सवाल है इस वक्त नो रन स्कोर्ड इन दिस डिलीवरी और गेंदबाज इस वक्त तैयार। Not connected that one properly. Once again a dot ball bowled and the scoreboard stays at 8 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. एक बेहतर लेग लाइन के साथ गेंदबाज मुन्ना इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। बेहतर गेंद लो फुट टॉस के तौर पर गेंद को साइड पर उछालना चाह चुके और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। रन बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 8 रनों पर और मुन्ना अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट या गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट पंच किया इस वक्त गेंद को। गेंद जाती हुई बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। थ्रो पहुंचा नजदीकी मामला लेकिन जी नहीं। थ्रो यहाँ पर पहुंचकर विकेट कीपर थ्रो को रिसीव करने के बाद विकेटों पर निशाना दागे उनका निशाना चूकता हुआ और बल्लेबाज 2 रन यहाँ पर बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा पूर्ण करते हुए। स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 11 for the loss of 1 wicket after completion of 2 overs. 10 on the board in fact. 10 for the loss of 1 wicket after completion of 2 overs. Now exactly 20 runs required in remaining 3 overs. That means in remaining 18 deliveries. was 20 runs required. और जहाँ तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का मणिकंठा इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और सबना इस वक्त करते हुए विल्सन। 20 runs to get from remaining 18 deliveries. Still I must say it could be anybody's game in this situation. दोपहर का वक्त दोपहर के 12:30 यहाँ पर बचते हुए और धूप का प्रकोप इससे बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ता नजर आता हुआ। मंगलुरु मीडिया द्वारा एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है। जनाब कमल अहमद इनके सारथ्य में और इस बीच एक ड्राइव कर दिया कवर पॉइंट पर 1 रन का इजाफा एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 11 ऑन द बोर्ड फॉलोज एक 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। तीसरा ओवर शुरू हो चुका है। 19 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 17 बॉल्स नाउ और मैच अभी भी बराबरी पर रख चुका है। गेंदबाज मणिकंठा अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ अक्षय कवर की दिशा में और गेंद को बेहतर फील्डिंग के जरिए रोके। रनआउट का खतरा और निशाना चूका। ओवर थ्रो देयर। नाउ इट्स गोइंग टू बी मोर रन एंड 1 declared it. That means 2 + 1 3 runs added to the total. 3 बहुमूल्य रन उनके खाते में जुड़ता हुआ। बेहतरीन फील्डिंग डीप कवर पॉइंट के फील्डर ने की थी लेकिन वहाँ पर कोई बैकअप नहीं तो एक रन और बल्लेबाज प्राप्त करते हुए 14 ऑन द बोर्ड। नाउ 16 बॉल्स लेफ्ट एंड 16 रन रिक्वायर्ड। 16 गेंदें बाकी 16 रन चाहिए। और गेंदबाज मणिकंठा इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए विल्सन जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है और मणिकंठा
दोनों अंपायर आपस में कुछ बातचीत यहाँ पर करते हुए और गेंदबाज विल्सन जो कि बल्लेबाज हैं इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। मणिकंठा की गेंदों का बाएं हाथ राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची, नो बॉल का इशारा, नो बॉल एंड अ फ्री हिट डिलीवरी फॉर द बैट्समैन नाउ विल्सन। ऑफ स्टंप्स के लाइन के काफी बाहर गेंद इस वक्त गुजरते हुए और एक रन का इजाफा, 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। फ्री हिट डिलीवरी मणिकंठा to Wilson, lofted, and I think it could be taken. No, in fact, it fell short between the two fielders, and the batsmen come back for the second, and they come back for the third. This time, I think this is gone. In fact, it's gone. Fantastic return came from the long off fielder, straight over the stumps. और बल्लेबाज अपने क्रीज से कुछ इंच इस वक्त बाहर रह गए। 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे। एक विकेट यहाँ पर गिर चुका है और जहाँ तक सवाल है इस वक्त स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 रनों पर। So Wilson, the batsman, has to go. तो विल्सन इस वक्त पेविलियन वापस लौटते हुए और 17 रनों पर दूसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका। विल्सन हैज टू डिपार्ट फॉर 5, नाउ इट्स 17 for 2। He's gone. He's out. 17 the score. 3 balls bowled in this over. 2.3 overs bowled, 17 on the board. 13 runs to get from remaining 15 balls now. और गेंदबाज नए बल्लेबाज क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए इस वक्त Lakish, the new batsman, is now comes out to the middle. 13 to get from 15 deliveries. Still, I must say it could be anybody's game in this situation. और गेंदबाज मणिकंठा गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। Here he bowls. Outside the off-stump, cuts that one. Down to a third man for a single. 1 declared it. 18 on the board. Now 12 runs to get from remaining 14 deliveries. What a fantastic match is now progressing here. The match number 2 of this prestigious cricket tournament. Attavara Premier League Season 7 2026 is now progressing here. The equal battle is now on. मणिकंठा अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार है और इस बीच बल्लेबाज की गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक इस वक्त कवर पॉइंट पर 4 रनों के लिए। ऑफ द बैकफुट गेंद को स्कूप किया था स्क्वायर ऑफ द विकेट बल्लेबाज ने और चौका यहां पर प्राप्त करते हुए और इस चौके के साथ समीकरण यहां पर आसान होता हुआ, बेहतर स्ट्रोक धनु के बल्ले से लगता हुआ। स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू
22 for the loss of 2 wicket. Now just 8 to get for victory in remaining 13 balls. 13 गेंदें बाकी, 8 रन चाहिए विजय के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक धनु के बल्ले से लगता है. और जहां तक धनु का सवाल है, बेहतरीन पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए. धनु इज बैटिंग ऑन 14 इंक्लूडिंग 2 बाउंड्रीज. और full toss on side per Moda. Brilliantly taken by the fielder at mid wicket. This is an outstanding catch taken by the mid wicket fielder. और अपने आगे की ओर ड्राइविंग लगाते हुए गेंद को इस वक्त जमीन से कुछ इंच अंदर, कुछ इंच ऊपर के लपकने में सफल अख्तर जो फील्डर थे. और इस बेहतरीन कैच के बदौलत यह विकेट गिर चुका है धनु का. So 3 overs completed, 22 for the loss of 3 wickets. Dhanu departs and is out for well-made 14 runs including 2 boundaries. And it's 22 for 3. 8 runs to get from remaining last 2 overs. That means in remaining 12 deliveries. Twelve balls left, 8 runs required. Rakshit, the new batsman, is now comes out to the middle. और अख्तर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हैं. पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर एक बेहतरीन कैच अख्तर ने लपका था मिड विकेट पर. और इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. 8 runs to get from remaining 2 overs. That means in remaining 12 deliveries. First ball from Akhtar. Full toss, straight to fielder, extra cover fielder took the catch. One more wicket fallen. स्ट्रोक दमदार था, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत और एक्स्ट्रा कवर पर इन फ्लैटर वर्जन गेंद को लपका गया खूबसूरती के साथ फील्डर द्वारा. और इस वक्त विकेट गिर चुका है लकीश का. और 22 रनों पर चौथा विकेट खो चुका है. इट्स 22 for 4. Now 11 balls left, 8 runs required. और उनका आगमन होता हुआ नए बल्लेबाज के रूप में काफी अनुभवी बल्लेबाज यहाँ पर क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए. और उस वॉरियर्स के लिए ಕಿನ್ನ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಕೆಬಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ ನನ್ನ ಜಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಿನ್ನ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಕೆಬಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. So 8 runs to get from 11 balls. और अरुण काफी अनुभवी खिलाड़ी इस वक्त सपना करने के लिए तैयार. अख्तर यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, चूके डॉट गेंद. Now 10 balls left, 8 runs required. The tide is now slowly turning. और गेंदबाज अख्तर 2 बेहतर गेंदें 7 में फेंक चुके हैं. अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अरुण के लिए. इस बीच गेंद को खेल दिया इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर. और 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल. लेग बाय का इशारा. With that leg by run, the scoreboard moving up to 23 now. Now 7 runs to get in remaining 9 balls. और सामना करने के लिए तैयार रक्षित, जबकि गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अख्तर. ये गेंद इस बार अपील इसी के साथ ये विकेट गिर चुका. एब्सोल्युटली प्लम्ब इन फ्रंट गिवन बाय द अंपायर. उनका पैर बिल्कुल स्टंप्स के सामने था और पगबादा यानी लेग बिफोर विकेट प्लम्ब इन फ्रंट घोषित करते हुए मुख्य अंपायर. और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका. What a dramatic collapse happened in the last few deliveries in the innings of Arasu Warriors. They lost their 3 wickets in the last in the space of 5 deliveries. Now they are looking in trouble for the first time in this match. SKB cricketers ಕಿನ್ನ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ನಾಯಕರು. मधु नए बल्लेबाज. 8 balls left, 7 runs required. What a match is now progressing here. और अख्तर dot delivery. Now the tide is now turning. 7 balls left,
7 runs to get. And this is turning out to be a fantastic over from Akhtar. Just a single run he conceded in the first 5 deliveries. और इस ओवर में अंतिम बार तैयार था इन्हें तो बड़ा विकेट again this bar चूके stumped brilliantly by wicket keeper. That's it, fantastic over came from Akhtar. And because of this over, I must say, brothers Babu Gudda are now strongly back in the game. Now 7 to get from last over for Arasu Warriors. 6 wicket down. That means they got 4 wickets in hand. SKB cricketers, Kinna Warriors, ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಠಡಿ ಅಪ್ಪಂಬಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Sonal नए बल्लेबाज. Last over remaining, 7 runs to get. तो इस वक्त 6 गेंदें 7 रन चाहिए और जहां तक सवाल है इस वक्त देखते हैं अंतिम ओवर कौन सा गेंदबाज इस वक्त फेंकते हैं. So the bowler starts the fresh proceedings. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए अरुण इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ओवर की पहली गेंद 7 रन चाहिए 6 गेंदें बाकी. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. इस बार ऑन साइड पर मोड़ दिया. खूबसूरत स्ट्रोक अरुण का. डीप मिड विकेट पर जस्ट अ सिंगल ही गॉट. एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 24 the score now. That means 6 to get from 5 balls. और गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार सोनल के लिए. Full toss, lofted. This time I think chance for the fielder. Long on and he took the catch successfully. One more wicket fall on. Not fully controlled that shot. And a well judged catch taken by the widest long on fielder. So wicket number 7 down. 24 for 7. Kinna Warriors toss. They won the toss, and what the decision they will take, just we have to wait and see. Four balls left, and 6 runs required. Kinna Warriors elected to field first after won the toss. मिथुन गेंदबाज जो कि विकेट प्राप्त कर चुके हैं पिछले गेंद पर. 4 गेंदें 6 रन चाहिए और बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. अजीज ये गेंद ऑन साइड पर मोड़ दिया खूबसूरती के साथ. फाइन गेंद जाती डीप अक्रॉस स्क्वायर लेग सीमा रेखा से के बाहर इस वक्त हो चुकी है 4 रनों के लिए. फैंटास्टिकली टर्न्स अराउंड द कॉर्नर बाय द बैट्समैन and he just got a boundary for that. Nazir the batsman who hit a boundary. And with this boundary, the equation seems to be much easier for them. 28 for 7. 3 balls left and 2 runs required. 3 गेंदें 2 रन चाहिए इस वक्त. गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट मिथुन गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. अगली गेंद लेकर तैयार. इस बार गेंद को ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग कैच टेकन बाय द फील्डर शॉर्ट मिड विकेट. और निश्चित रूप से अख्तर जो फील्डर थे सिलिमी डाउन पर बाईं और डाइविंग लगाते हुए बेहतरीन कैच इस वक्त लपका. इससे पहले भी एक कैच वो मिड विकेट पर लपक चुके थे और यहाँ पर इस कैच का अगर जिक्र किया जाए तो बेहतरीन कैच अपनी बाईं और डाइविंग लगाते हुए विद वन हैंड जस्ट टुक अ स्टनर. One more wicket fallen, 8th wicket gone. Now 2 balls left, 2 runs required. 8 wickets down for Arasu Warriors. और निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा मैच इस वक्त बराबरी पर रुक चुका है. नंबर 10 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम आगे बढ़ाते हुए. हरीश number 10 batsman is now comes out. 2 off 2. 2 balls remaining, 2 runs to get, 2 wickets in hand.
2-2-2 the sequence shows for the batting side. और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। इस बार रन के लिए दौड़ पड़े एंड इज गॉन। नाउ द लास्ट बॉल रिमेनिंग 2 runs to get, 1 for tie, 2 for win और अंतिम विकेट बाकी। Arun the man dismissed, run out unfortunately the striker end. Last ball remaining, and the number 11 batsman Cannon is now comes out to the middle. 2 runs to get from last ball, 1 for tie, 2 for win, and the match deciding ball is now coming up from the hands of Mithun to Cannon. और जहाँ तक सवाल है अंतिम विकेट जोड़ी, the last ball is now coming up. The match deciding ball comes. Here we go. Mithun bowls. Oh, this time dropped, collected in the second attempt, and just a single they got, and the match now ended in a tie. So what a fantastic match ended. Last ball desperate attempt made by the fielder at short extra cover, लेकिन गेंद को लपकने में असफल, बेहतरीन प्रयत्न किया लेकिन फील्डर, और मैच इस वक्त टाई पर समाप्त हो चुका है। पॉइंट्स विल बी शेयर्ड, अंक बांट दिए जाएंगे और निश्चित रूप से कहना पड़ेगा मैच ऑफ द टूर्नामेंट हैज बीन केम टू एन एंड बिटवीन ब्रदर्स बाबू गुड्डा वर्सेस अरसू वॉरियर्स व्हिच ended in a tie. Man of the match Akhtar, who bowled fantastically, conceding just 2 runs, conceding just 1 run, and he took outstanding 2 catches. Because of that fantastic fielding and bowling performance, Akhtar adjudged the man of the match. I request Akhtar, please go to the stage and receive the man of the match award from one of our organizer. So the match number 3, Kinna Warriors, after 1 toss they elected to field first against SKB Cricketers. So एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
Welcome back once again for the match number 3 of the day number 1 of Attavara Premier League Season 7 2026, which is proudly presented by Sri Durga Friends in this MAK cricket ground. Kidna Warriors versus SKB Cricketers. Winning the toss, captain of Kidna Warriors are elected to ball first. And opening batters of SKB Warriors are walking towards the middle with the jersey number 09 and jersey number 5 are Sunil and Dhanush. Dhanush will be the non-striker and Sunil will be the striker. Man of the match of the previous one with excellent knock played by Sunil for his team with the 25 unbeaten runs, and he will going to take the strike. Santosh KB brought it attack to bowl the first over, and Sunil will going to take the strike. Played it. Nice looking stroke. What a shot there from Sunil. Absolutely fantastic wristy stroke. What a shot. Just a roll of the wrist which comes into play. Helicopter shot from Sunil. Ball went into the deep mid-wicket boundary for 4 runs. Back fantastically struck by Sunil. What a great shot from him. Delightful stroke. And 4 on the board without loss of any wicket. Intention is very clear from Santu that he just wanted to go after the bowler in the power play. Second time in this over. Mid on, mid off, extra cover, cover point, short third man, short square leg, short mid wicket. Long off and fielder at deep extra cover. The fielders are in the deep. Outside and off time going for the square cut. Outside edge of the bat will going to retain the strike. Declared area. 1 addition to total 5 on the board for no loss. Dhanush and Sunil, the opening batters, SKB. They're playing their second match. They won their first match against Good Day Bulls with outstanding chasing. And Sunil has played a match-winning knock for his team in this first match. Now they're playing their second match of the league, and Kidna Warriors playing their first match. Here comes Santu balls, lovely delivery, flighted one, beaten by the beautiful leg cutter. And Sunil just wanted to get that helicopter shot into the mid-wicket, but missed it completely. No runs scored. The scoreboard remains on 5 on the board. Good comeback here by the bowler. Santu. Oh, what a shot! That will going to be a huge one. And that goal gone a many miles out of the park. When the ball is in the arc of Sunil, he will going to dispatch the ball out of the park. And that ball gone a many miles. What a shot there from Sunil. Outstanding struck. The loosener there from the bowler outside the line of leg stump. You can't do the mistake of bowling that line.
to the caliber of Sunil. What an outstanding struck came from Sunil. And scoreboard jumps into 11 on the board. Here comes Santosh. Have to come back very strongly. Already 11 came from this over with the boundary and 6. Sunil. Once again, lovely delivery coming into the batter. He's got a bat onto that in the last moment. One more addition to total addition of that single score. Namuzan to 12 on the board for no loss. Electrifying start. Especially the Sunil is dominated with the boundary and 6 in this particular over. Dhanush will going to take the strike. Here comes Santosh again. Last time in this over. No one there in the deep in the offside region. Long on and the mid wicket. The fielders are in the deep. Straight to the fielder, drops it. The straightforward opportunity is gone in vain. First over gone after completion of first over. A good start for the team SKB cricketers. They are 12 on the board for no loss. The power play certainly goes in the favor of SKB cricketers. The man who responsible for that 12 runs with the 6 and a boundary by Sunil. Experienced bowler Raghu brought into attack. The man who played for KCCR Kadri registered for many years. Excellent and experienced campaigner. The master of leg cutter brought into attack to bowl the second over from the road end. Very bright and sunny afternoon. Time is exactly 1 o'clock. Here comes Raghu. Spread out field side, deep square like mid wicket, long on. Deep extra cover, deep wideish long off. The fielders are in the deep, short extra cover, short third man, back at point. Short mid wicket. Raghu. Beautifully bowled, beautiful leg cutter. Raghu knows that Sunil is a key player for the opposition. It's a little margin for her, can't give any short pitch delivery to him. Second time in this over. Right arm over the wicket, bowls. This time Sunil almost off the front foot, pushes the ball down to point region for a single with that single scored Namuzan to 13 for the loss of, without loss of any wicket. Raghu knows that this is a very important over. They have to get some good over for the team. Kinna Warriors. Again, wanted to go for the cut shot. Missed it completely. Wicketkeeper behind the stump. Off stop. No run scored. Turning out to be a good over. Fourth time in this over. Raghu to Dhanush. Bowled him, cleaned him up. Raghu strikes, very important breakthrough for the Kinna Warriors. After that expensive over, Raghu knows that this is the 1 over, he had to bowl well. And so far he did a great job. 4 deliveries, just single run, and he picked a wicket off Dhanush. This is what all about the experience of this man. Fantastic delivery, quicker and fast over. No clue whatsoever for Dhanush, just wanted to go for
the cut shot, but ball is absolutely did the trick. Zero six, the jersey number Nihal for SKB as a number 3 batter in very important batting order, the position. Raghu to continue. To Nihal. Nicely played down to short mid-on region for a single. With the addition of that single, Skobana moves on to 14. And this is quite and excellent over from the point of view of Kinna Warriors from Raghu. Now it's going to be a great contest. And Sunil back on strike. Man, he scored a boundary and 6 in the previous over. Will going to face Raghu. Final time in this over. Oh, what a delivery. Unplayable leg cutter with a fantastic line and length. Over completed, umpire. Sorry, 1 ball remaining. 15 on the board. Excellent over in progress from Raghu. Ball aim, it's gone. 1 more wicket back in the pavilion. What a fantastic stuff here from the bowler Raghu. Leg before wicket. Absolutely flum. This is huge fish in the net. Raghu just bowled that delivery on the midland leg stump. Sunil tried to play that one defensively. Beaten by the turn and the flight. And he's right in front of middle stump. The huge wicket back in the pavilion. Outstanding over which comes here from Raghu. Comes to end here from Raghu. 15 on the board. What a comeback by Raghu. After that, the first over is a very expensive. And he came into ball in the second over. Not only bowled beautifully, but he picked up valuable wickets. Opening batters back in the hut. Sushant, the new bowler in. Every player having that same jersey number 19 dedicated to Kiran. The late Kiran, one of the great player for Attavara. Nicely bowled. Chance of run out there. On his follow through, tried to pick the ball, but he missed it completely. 1 more addition to total. Shiva Prasad, the new batter in. Technically very sound player. The very good performance in the season 6. Shiva Prasad. And very good striker of the ball. Oh, straight to the fielder. He drops it. Straightforward opportunity is gone in vain. Just say number 9. Charan drops the catch. 19. Everyone has got a 19. Charan, the fielder, drops the catch. And lucky escape for Shiva Prasad.
17 for 2 wicket back in the pavilion. Shishant. Lovely shot, very down to extra cover. Asian. They're coming back for the second. Very good looking stroke there from Nihal. Technical stroke. Played it uppishly and safely down to deep extra cover for a couple of runs. Score, but moves on to 19. In the over number 3rd is in progress. Here comes next ball. Oh, lovely delivery. Wicket keeper missed it. But it's a declared area by call by umpire. With that extra score, but moves on to 20. And the wicket keeper misjudging. He thought it might be the ball. He hits a stump. But a lovely delivery there from Shishant. One more good over is in progress. 4 in the 4. 5th time it is over. The lovely shot. Played it down to deep in wicket region. Paisley, and they're looking for second, asking for trouble. Only a single. With that single score, but moves on to 21 on the board for 2 wickets back in the pavilion. One more good over is in progress. Shishant to Shiv Prasad. Nicely balled. Flicks that one down to fine leg region. Beautifully balled by Shishant. Wicketkeeper missed it. One more over which is comes in. 3 gone after completion of over number 3. It's 22 for 2 wicket. The team SKB cricketers going exactly 7.33 runs per over. Shreyas, the bowler. Shiva Prasad, the man who got a life in the very first delivery faced. Dropped by the fielder at extra cover and a straightforward opportunity. A very bright, sunny and very breezy afternoon. The wind which is passing in the middle of the ground behind the wicket. Shreyas to ball. Pass on by Suresh Madabadri, right arm over the wicket. Ah, what a shot! Fantastic one there from Shiva Prasad. I've already mentioned he is the man who scored a lot of runs in the season 6 for his team. And what outstanding timing in that shot. Just a sheer timing. Flick of the wrist just comes into play. And he got a strong wrist. Easily dispatched that one to deep square leg for a maximum. Little margin for error when you're bowling in the afternoon. Bowling to the legs of batters, always asking for trouble. 28 on the board for SKB Warriors. Cricketers, correction. One more big one. This is a much better than the previous one. And that ball is gone a many miles again. He's now dealing with the sixes, Shiva Prasad. The bowler is not really learning from the mistake. Again, he bowling to his legs. This time outside the line of leg stump. And just passed that one into deep square leg for a huge 6. .35 on the board, 34 on the board. Back-to-back 2 sixes from the bat of Shiva Prasad. Will it go into be a hat-trick 6 of the season 7 of Attavara Premier League? The same line, but this time too much outside the line of leg stump. But still, Shiva Prasad wanted to go for the big one. White call by umpire, 35 for the loss of 3 wicket. Shreyas. Once again wide. He's in absolutely under tremendous pressure. After that back-to-back 2 sixes.
Here comes Shreyas. Over the wicket, right arm. Appeal for leg before wicket. Umpire not interested. Leg by call. One more addition. Scoreboard moves down to 37. The first better delivery came from the hands of the bowler Shreyas. That brings Nihal into strike. The very good striker of the ball. And played it very nicely into the square leg region for a single. With the addition of that single, scoreboard moves on to 38 for 3. 35 for 2 in fact. 38 for 2. Fifth time in this over. Shiva Prasad again wanted to go for the big one, missed it completely. It's a wide call by umpire. The review has been taken for that decision from umpire. ಇದು 6 ಬೋನ್ ಅದ ರಡ್ಡು ಐದಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹಾ ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ ಅಜ್ಜಿ ಆಡ ಅಪ್ಪನ ತಾವು Again deflected from the legs, and one more single in the form of leg by. That leg by scored moves on to 40. I wanted to go for the reverse if they're going for the quick single again. Very good runs on the board. Umpire, just a minute.
Yes, after completion of over number 4, it's 42 on the board. Atul brought into attack. Again, just wanted to go for the run. Chance of run out in a non-striker's hand, and it's gone. Nihal back in the pavilion. One more wicket back in the pavilion. It's a third wicket gone. It's 42 for 3. The over number last is in progress. A very good innings of Nihal is giving some support for Shiv Prasad in other end. Just number 18, Ravi, the bowler batsman, walking towards the middle. Atul will going to continue second time in this over. Right arm over the wicket. Swings and mitts outside the line of off stump. Lovely delivery indeed. Ball is just passing under the bat of the batter Shiv Prasad. The last 4 deliveries remaining. Shiv Prasad already hit 2 sixes in the previous over, down to deep square leg and 1 down to fine leg. Ball aim, cleaned him up. Shiv Prasad beaten by that beautiful leg spin delivery of Atul. He wanted to play against the line. You miss high it and he just disturbed the furniture. The wicket number 4 back in the pavilion. 42 for the loss of 5 wickets. And very good innings which comes to an end of Shiv Prasad. They scored 14 valuable runs. Pity, the new batter in. Kiran, the new batter in. And one more chance of run out there. Umpire says not out. Rightly so. It just have made it. The umpire will going to ask for the third umpire to give the decision. It might be the very close one, but wait and see what could be the decision from the third umpire. Not out is the call and 1 run added. 43 now for the loss of 4 wicket. The last over is in progress. The last 2 deliveries left in this over of Atul. Turning out to be a very good last over so far. Right arm over the kitty balls. Beautifully bowled. Perfect leg cutter there from Atul. This is one of the best over from the point of view of Team Kinna Warriors. From Atul. Last time in this over. The batter is on strike. Kiran. Ravi. Oh, chance of caught behind but run out. The last ball is also run out. What a great over there from Atul. Excellent over. And after completion of over number 5, 43, which is the total score of SKB, but still is a good score. And the 44, which is a target for the Team Kinna Warriors to win this match. Definitely it's a good score from the batters of SKB. They managed to get, and 44 is the target set for the Team Kinna Warriors. Take a short break. We are back once again. Thank you.
धन्यवाद सतीश. So match number 4 is now going to start. Match number 4 is now coming up live exclusively between Good Day Bulls versus Arasu Warriors. And because of that, I request all the players of Good Day Bulls as well as Arasu Warriors, please report to the stage immediately to make a sign in the official chart for the next match. ಗುಡ್ ಡೇ ಬುಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅರಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. राचू एंड अखिलेश दी ओपनर्स. बॉलर जो कि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए 44 द टारगेट, 44 रनों का लक्ष्य और गेंदबाज यहाँ पर प्रारंभ करते हुए जय गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. और जहाँ तक सवाल है जय का, तो इस वक्त वो गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज राघु के लिए और उनके पारी के पहले गेंद लेकर तैयार अजय. गेंदबाजी शुरू करते हुए राघु के लिए पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ और पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. Left-hand, this time he finds the gap. One bounce and it taken consider of just inside the fence by the fielder. I think Nihal the fielder making a fantastic work and a couple of runs added to Raghu in this delivery. और इस इन 2 रनों के साथ किन्ना वॉरियर्स आर ऑफ द मार्क. 2 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के. बेहतरीन स्ट्रोक राघु के बल्ले से लगता हुआ और गेंदबाज अजय अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार अजय राघु के लिए. इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद और कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी. सही गेंद घोषित था और जहां तक सवाल है रनों का तो रन्स नहीं मिलेंगे. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುಡ್ ಡೇ ಬುಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅರಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಗುಡ್ ಡೇ ಬುಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅರಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. और ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद इस वक्त जहाँ तक सवाल है वाइड का इशारा यहाँ पर अंपायर द्वारा हो चुका है. शायद गेंदबाजी करने बाद अंपायर के आड़े आ गए थे, तो इस वजह से अंपायर को ठीक से मालूम नहीं पड़ा पहले, लेकिन बाद में परामर्श करने के बाद इसे वाइड घोषित करते हुए और स्कोर बढ़कर अब पहुँच चुका 3 रनों पर. 3 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और गेंदबाज अजय गेंदबाजी इस वक्त करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज अखिलेश के लिए. Lofted that one firmly struck into the gap as well. और गेंद सीमा रेखा को इस वक्त पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. अपने पैर के जरिए गेंद को रोकना चाहता, ढकेला अपने पैर के जरिए, लेकिन उनके पैर पर टकराने के बाद गेंद सीधे सीमा रेखा को पार कर चुकी है. सीमा रेखा के स्टेप्स पर टिप्पा खाती हुई 4 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त अखिलेश के बल्ले से लगता हुआ और इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनके पारी का प्रगति पर. और गेंदबाज अजय इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए और अखिलेश जो कि राघु जो कि सामना करते हुए इस बार ड्राइव कर दिया राघु के लिए. एक रन मिस फील्ड और गेंद डीप इन विकेट दिशा में बढ़ते हुए और 2 रन बल्लेबाज यहां पर दौड़कर पूर्ण कर चुके. 3 रन के लिए दौड़ पड़े और 3 रन प्राप्त करने में सफल. बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट. 3 रन राघु और टीम के खाते में जुड़ता हुआ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 10 रनों पर 10 ऑन द बोर्ड. और जहां तक सवाल है इस वक्त स्कोर का, तो 10 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है. बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हुए राघु और सामना करते हुए इस वक्त अखिलेश. 4 गेंद इस वक्त फेंके जा चुके हैं और अजय पहला ओवर एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर. अजय अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अखिलेश जो कि सामना करने के लिए तैयार. अगेन द स्क्वायर ऑफ द विकेट. मौका जरूर एक्स्ट्रा कवर फील्डर के लिए और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है. अखिलेश का स्ट्रोक उतना बेहतर नहीं था और प्लेसमेंट पे बिल्कुल गलत था और डीप इन विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने कोई गलती नहीं की. फर्स्ट विकेट फॉलन. अखिलेश डिपार्ट्स. It's 10 for 1.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುಡ್ಡೆ ಬುಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅರಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗಾಗಿ. ಗುಡ್ಡೆ ಬುಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅರಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. New batsman is now comes out to the middle. अतुल नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद और अजय इस ओवर में अंतिम बार तैयार. गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज बॉल्ड हिम. फर्स्ट बॉल गोल्डन डक डिसमिसल फॉर अतुल. और बेहतरीन गेंद थी इस वक्त गेंदबाज अजय की एंड ही जस्ट गेट द रीड ऑफ द बैट्समैन एंड सेकंड विकेट फॉल ऑन. और अजय पहले 4 गेंदों में 10 रन प्रदान करने के बाद एक बेहतरीन वापसी इस वक्त कर चुके हैं. अंतिम 2 गेंदों में 2 विकेट प्राप्त करने में सफल अखिलेश और अतुल के रूप में. फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 10 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. मिक्स स्टार्ट फॉर किन्ना वॉरियर्स. धनुष द बॉलर स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार. धनुष अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर राघु इस वक्त सामना करते हुए. द फर्स्ट बॉल ऑफ देयर सेकंड ओवर ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. $34 to get in remaining 24 deliveries. The equation stands for किन्ना वॉरियर्स. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए धनुष अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. ओवर की पहली गेंद रघु जो कि सामना करते हुए. Just one played reverse shot, not succeeded. It's got a single, one declared it. And with that single run, the scoreboard moving up to 11 on the board, following 2 wicket at the start of the second over. 33 more runs now they have to score for victory in remaining 4 plus overs. 4 overs, in exactly 4 overs in fact. और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. Loved it. This time I think it's got a no. In fact, it taken just inside the fence by the fielder at long off. दमदार स्ट्रोक था लेकिन इतना दमदार नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके. और लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर गेंद को इस वक्त लपक लिया गया. 11 for 3 now. So number 5 batsman is now coming out to the middle. तो इस बीच अंपायर का इशारा वाइड का.
तो वाइट के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। और धनुष इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहा। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंचे मिड विकेट पर इनटू द गैप एज वेल। गेंद का पीछा करते फील्डर एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन पूर्ण करने में सफल। इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड करके थ्रो करे स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर। 3 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर। और इस बीच धनुष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सुशांत जो कि सामना करने के लिए तैयार। फुल टॉस बाउंड है, जस्ट कॉन्फिडेंट ऑफ नॉट सक्सीडेड। फुल टॉस डिलीवरी और बल्लेबाज का विकेट प्राप्त करने में सफल। एक्स्ट्रा क्विकर फुल टॉस गेंद थी और इस गेंद के तेजी को समझ नहीं पाए बल्लेबाज सुशांत और बोल्ड आउट के रूप में आउट होने के बाद पेविलियन वापस लौटते हैं। 14 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट नाउ आई मस्ट से किन्ना वॉरियर्स लुकिंग deep in trouble. They lost their 4 valuable wickets for adding just 14 runs on the board. Number 6 बल्लेबाज श्रेयस का आगमन होता हुआ is now comes out to the middle as the number 6 batsman and is now going to face the bowling of धनुष। और धनुष इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अंपायर जो कि विकेटों को इस वक्त सही करते हुए और इस बीच अपने स्वस्थान पर जाते हुए और धनुष इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार श्रेयस के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। Just wanted to work away on the onside, not succeeded, and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. (14) for the loss of 4 wicket in the over number second in progress. अंतिम गेंद इस बीच पॉइंट पर गेंद पहुंची और 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। 1 run added to the total. 15 for the loss of 4 wicket. And over number third is bad. Second in fact, second has been game strand. 5 runs came from this over. Pretty good one from Dhanush game strand and has got 2 wickets and 2 overs completed. 15 for 229 more runs now they have to score for victory in remaining 3 overs. That means in remaining 18 deliveries and exactly 9.66 the required run rate for them in this situation. 18 balls and 29 runs required. किरण गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। 18 गेंदें बाकी, 29 रन और चाहिए और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद स्वीप, इस बीच गेंद को स्वीप करना चाह चुके और गेंद पहुंची शॉट फाइनल पर रन बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे। और श्रेयस जो कि इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं और किरण तो वाइट के लिए इस वक्त देखने के लिए प्लेयर्स डगआउट की ओर इस वक्त अंपायर पधारते हुए।
इट्स अ फेयर डिलीवरी। और जहाँ तक सवाल है रनों का, तो रन इस गेंद पर बल्लेबाज या टीम को नहीं मिलेगा। और पहली गेंद इस वक्त फेंकी जा चुकी है किरण की, और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज श्रेयस, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। रिवर्स शॉट खेलना चाहा, अंतिम एक्शन में अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था। देखा कि गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रही है, और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 16 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद just gone for a sweep shot at the last moment, not succeeded. The ball gets some extra bounce and went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman. A fantastic bowling performance continuing here from the bowler Kiran in this over. Off stump se bahar, wide again. 17 for the loss of 4 wickets. Kiran अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार रहा। Quick piece of work, excellent delivery from the bowler, and excellent wicket keeping from wicketkeeper, just flicking the wickets in a fraction of second. लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद था, और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित था। 17 for the loss of 4 wicket in the over number 3 in progress. 15 balls bowled in their innings. 15 balls still have to bowl, and in remaining 15 balls, 27 more runs now they have to score for victory. 44 the target. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए किरण श्रेयस के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। रिवर्स शॉट, जस्ट वांट टू प्ले रिवर्स शॉट, नॉट सक्सीडेड, अगेन अ डॉट बॉल बाउल, एंड अ फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम किरण इन दिस ओवर। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो किरण इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। किरण इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। ये गेंद इस बार, ओह फैंटास्टिक वन, दैट इज एन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, much straighter line, passed between batsman's bat and leg and stuck to his middle off stump. Bells are disturbed. Fantastic delivery from Kiran, and the batsman Shreyas is now backing to pavilion. One more wicket fall on. They are looking deep in trouble, in fact. Fifth wicket down. It's 17 for 5. तो अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, लेफ्टी बैट्समैन, और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार रहा। और किरण इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी करते हैं। फील्डिंग पे जमावट इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े हुए फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया जा रहा है। और किरण अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। Here he comes. Right arm round the wicket, bowls. Missing outside the off stump, and a wide declared by umpire. और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 18 रनों पर, 18 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स नाउ। और गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार रहता है। हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। Just gone from my team, not succeeded. Dot ball to end the over. 3 gone. After 3 overs, the batsmen of Kidna Warrior searching for the right track. They managed to score only 18 runs on the board for losing 5 wickets. Now, the equation stands 26 to get from remaining 2 overs. That means in the remaining 12 dealers, the required run rate is now straight away gone up to exactly 13 runs per over. रवि गेंदबाजी शुरू करते हुए 26 रनों की ओर दरकार बचे हुए 12 गेंदों में। और गेंदबाज रवि अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, सामना करने के लिए तैयार रहा इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज कवीश। और चौथा ओवर उनके पारी का इस वक्त शुरू होता हुआ। रवि
फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए और कविश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। मैच नंबर 3 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत Attavara Premier League Season 7 2026 is now progressing along nicely in this beautiful Mbekere cricket ground. और इस बीच गेंदबाज रवि ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। इस बार चूके पैरों पर गेंद टकराई, रन निशाना चूका, दोबारा निशाना टकरा चुका है एंड दिस टाइम इज बैकिंग टू पेविलियन। शॉट फाइन लेग फील्डर का फेंका गया निशाना चूकता हुआ, लेकिन तुरंत बैकअप करते हुए वापस से निशाना दागा विकेट कीपर ने और उनका निशाना इस बार बिल्कुल सही बैठता हुआ और ये विकेट यहां पर गिर चुका। 1 more विकेट फॉलन। तो बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए एक और विकेट गिर चुका है। 6 विकेट डाउन। नाउ 11 बॉल्स रिमेनिंग। (26 to get from 11 balls now. और रवि गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद। चरण नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद और गेंदबाज इस वक्त तैयार। रिवर्स शॉट डाउन टू शॉट फाइन लेग, 1 डिक्लेयर्ड इट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 19 रनों पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। नाउ 10 balls left and 25 runs required. The required run rate is now creeping up for them in this situation. Fantastic live coverage we are just watching here from Mangalore media under the great leadership of Mr. Kamal Ahmed. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार। रवि अगली गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद और वाइड का इशारा। 1 run added to the total and with that single run the scoreboard moving up to 20 for the loss of 6 wicket. तो इस बीच बेहतर गेंद, फैंटास्टिक वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स, लेकिन बल्लेबाज का बैकफुट नहीं, खुद अंपायर पिंटो इस वक्त प्लेयर्स डगआउट की ओर आते हुए खुद तीसरे अंपायर इस वक्त बनते हुए और ऐसा कम उदाहरण देखा गया है जबकि फील्ड अंपायर तीसरे अंपायर बने हो। और इस वक्त देखते हैं यहाँ पर खुद इसका परिशीलन करने के बाद इस वक्त क्या निर्धार वो यहाँ पर देते हैं। तो इस मैच के बाद 10 मिनट का ब्रेक इस वक्त दिया जाएगा। We have got 10 minutes break right after this match for the officials lunch. और मैच में इस वक्त काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए किन्नी वॉरियर्स के बल्लेबाज निश्चित रूप से absolutely difficult time continuing here for the officials, umpires and commentators for lunch. In fact, still they are running shortage of time to having a lunch. Out is the call from the field umpire himself from the third umpire, and one batsman has to go. The field umpire as well as third umpire Roland Pinto given out for the batsman, and Charan the man dismissed. 7th wicket down. It's 24-7. 9 balls left, 24 runs required now. पहले ओवर में 10 रन बने थे, तब ऐसा लग रहा था, राघु ने जब 10 रन बनाए थे तब ऐसा लग रहा था किन्नी वॉरियर्स के बल्लेबाज लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद बेहतरीन कमबैक करते हुए एसके बी के गेंदबाजों ने अपना शिकंजा कसा और अगले 10 रन प्रदान करने तक 8 विकेटें प्राप्त करने में सफल। दिस इज एन एब्सोल्युटली कमबैक मेड बाय द bowlers of SKB cricketers after being conceding 10 runs from the first over. They come back very well, conceding next 10 runs in the next 2.3 overs for conceding 10 runs, and they picked up 7 wickets. और
इस बीच गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए रवि दाहिने हाथों पर द विकेट तैयार. Just stuck to his leg at the last one, running down to a square leg area fielder after it. They completed one, and the batsman got only a single for that stroke. Leg by, declared by umpire, 21 for the loss of 7 wickets. रन्स सिर्फ सिंगल्स के रूप में बनते हुए चाहिए इस वक्त चौके और छक्के यहाँ पर कमबैक करने के लिए बल्लेबाजों को. और गेंदबाज रवि एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. 8 गेंदें बाकी और 23 रन चाहिए. 23 टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 18 ओवर्स. रवि अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. Lofted down to extra cover into the gap and one bounce into the fence for a boundary. Fantastic struck came from the bat of the right-handed batsman. After exposing the stumps, he hit that one pretty hard. Kavish, the batsman, who hit a stroke in between deep extra cover and wideish long off and finds the gap as well at last. Fantastic struck. Came in the important stage of the match for Kinna Warriors. 25 for 7. सुशांत जो बल्लेबाज थे जिन्होंने ये चौका लगाया था और 7 गेंदें बाकी. अब 19 रन चाहिए. 19 रन टू गेट फ्रॉम 7 बॉल्स नाउ. रवि इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर द विकेट. इस बार शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में गेंद पहुंची. शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में विकेट कीपर खुद गेंद तक पहुंचते हुए 1 रन का इजाफा लेग बाय के रूप में. ओवर नंबर 4 हैज बीन केम्स टू एन एंड. 26 for the loss of 7 wickets. 18 to get from last over. That means in remaining 16 overs. अगर कोई बल्लेबाज यहाँ पर छक्का लगाता है 2000 रुपए का नगद पुरस्कार सुमित इनकी ओर से घोषित किया गया है. पहली गेंद शॉट थर्ड मैन पर रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. द बॉलर स्टार्टेड द फ्रेश प्रोसीडिंग्स. और जहाँ तक सवाल है डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ तो अंपायर इस वक्त इशारा किया कि दे आर एग्जिस्ट देयर टाइम लिमिट. तो खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा. और अश्वित जो कि गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं. 5 गेंदे और रन्स चाहिए इस वक्त 18. 18 टू गेट फ्रॉम 5 बॉल्स. This time misses again. Good one from the bowler Ashwit. 2 consecutive dot balls bowled from him fantastically. Now the equation seems to be a stiffer and stiffer for the batting side. 18 to get from 4 balls. 4 गेंदे 18 रन चाहिए और अश्वित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. Lofted. This time taken by the feeder at long on. One more wicket fallen. 8th wicket down, and now the last chance in front of the batsmen of Kinna Warriors. 3 sixes required in the last 3 deliveries. That means 18 to get from last 3 balls. 3 छक्कों की जरूरत अंतिम 3 गेंदों पर अंतिम अवकाश. The last chance in front of the batsmen of Kinna Warriors. Number 10 batsman is now comes out to the middle. संतु इस वक्त नंबर 10 बल्लेबाज सामना करेंगे गेंदबाज की गेंदों का. और अश्वित गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए 18 रन चाहिए 3 गेंदों पर. 3 छक्कों की जरूरत बचे हुए 3 गेंदों में. और इस बीच अश्वित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार बल्लेबाज के लिए. इस बार चूंकि डॉट गेंद फैंटास्टिक डिलीवरी. 4 डॉट बॉल्स इन ए रो बॉल्ड बाय अश्वित. नाउ 2 balls remaining, 18 runs to get. और ऐसा लग रहा है कि सिर्फ औपचारिकताएं ही इस मैच में बाकी रह गई है अगर कोई चमत्कारी घटना ना घटे तो. और गेंदबाज
इस बार ऑन साइड पर मुड़ना चाहा, बैक टू द बॉल की दिशा में प्लम इन फ्रंट घोषित और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है. नाउ द लास्ट बॉल रिमेनिंग 18 रन्स टू गेट and it looks like just 4 minutes now remaining in this match. Fantastic 5 deliveries ball by Ashwit. अंतिम गेंद इस ओवर में इस मैच में कहना पड़ेगा. अब बाकी number 11, the last batsman comes out to the middle to face the last delivery of their innings. Kumar. The scoreboard stays at 26 for the loss of 9 wickets. कुमार अंतिम बल्लेबाज उनकी पारी के अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार और अश्वित गेंदबाजी करते हुए और देखना है कि अश्वित क्या अपना ये ओवर मेडन कर पाते हैं नहीं. Misses. That's it. Maiden wicket for Ashwit. And a 17 runs comprehensive victory for SKB cricketers against Kinna Warriors. And with that 17 runs comprehensive big margin victory, they back the complete one. So match number 3 of this prestigious cricket tournament, Attavara Premier League Season 7 2026 has been came to an end, which won by SKB cricketers defeating Kinna Warriors by 17 runs. And now the next match, Good Day Bulls versus Arsu Warriors. The match starts right after the 10 minutes break. And now it's 10. Now it's a break of 10 minutes for lunch for the officials. Thank you.
Once again, welcome back. I request the two teams, please get ready. Good Day Bulls and Team Arasu Warriors for the next match. Already we have a shortage of time. I request both the teams, please get ready. Umpires are ready here. Arasu Warriors winning the toss, selected to field first, so that I request all the players of Arasu Warriors, please go to the field immediately.
Welcome back once again. Good afternoon, cricket lovers. The match number 3 of Attavara Premier League Season 7, which is proudly presented by Sri Durga Friends Attavara in this MA cricket ground. In the match number 3 between Good Day Bulls versus Arasu Warriors. Winning the toss, captain of Arasu Warriors, they elected to field first. And we are just waiting for the opening batter of Good Day Bulls to enter into the ground. Good Day Bulls in the opening match, their fails to defeat the SKB cricketers. SKB cricketers defeated Good Day Bulls in the opener match. So very important match for Good Day Bulls. Wait and see how well they're going to open the accounts in the points table. Arasu Warriors get tie match against the brothers Babu Gudda. And one of the best match of the day, the tie match. The Arasu Warriors got 1 point and wait and see how well Arasu Warriors will go into play this match. Opening batters, just waiting for the opening batters of Good Day Bulls. ದಯಮಾಡಿ ಗುಡ್ ಡೇ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು. Everything is ready here for the opening over. The bowler brought into attack to bowl the first over with the jersey number 17. Wilson to start the proceedings from the road end and batter in front of him, Puneet, and a slight bit of change in the opening pair. Puneet and Akshay, the one of the most dangerous and experienced batter. Lovely reverse save, played it nicely in the gap. Reverse a deep backward point boundary for 4 runs. Lovely placement. Puneet knows that in the afternoon ball, the wind will going to flow towards the offside region. So he effectively played that reverse sweep in the power play. You know exactly there is no bodies out there in the deep backward point region. So he played that reverse sweep quite effectively down to deep backward point for 4 runs. And a positive start there from Puneet. He got a boundary in the first delivery of Wilson. Second time in this over, once again he tried to repeat that reverse sweep, but this time Wilson know exactly that the batter will going to try for another reverse sweep, so that he just managed to ball that one almost close to his body. Not really let the batter to settle for a big shot. Lovely shot, played across the line into the deep mid-wicket region. But just a single. Akshay not interested. Puneet is very much interested. And might be the risky one to go for the second run. That's why Akshay is not interested, rightly so. The 5 without loss of any wicket. Akshay in the previous match fails to contribute from the bat. Such a very good striker of the ball, a very handy left-hand batsman. Wilson to continue. Pass umpire Suresh Modibidri.
Tries that one, doesn't get hold of that one properly, but good enough for him to pick the single before Arun will go in to field the ball from the short mid-on region. And Akshay is off the mark and score now moves on to 6 on the board for no loss. One more dot delivery. Wilson bowled a dot delivery. And scored now moves on to 6 on the board for no loss. Right arm over the wicket, balls to Punit. Punit drives that one into the mid off. Lack of placement. Excellent comeback. The very good over, good comeback after the boundary in the first ball. Then he bowled very good line. Good comeback by young man Wilson. After completion of first over, good day. Bulls are 6 for no loss. So bright sunny afternoon. Time is exactly 1 past 30. This is the match number 4 in progress. The bowler brought into attack to bowl the second over with the jersey number 23. Lakesh, the bowler, to bowl the second over. After the power play, the fielding restriction is off. Deep square leg, deep long on, long off, deep cover point. Bowled him, cleaned him up. Lucky, just absolutely uprooting the stump of Akshay. Unplayable incoming delivery came from the hands of Lucky. The wicket number, the first is back in the pavilion. Akshay once again fails to contribute from the best bat. Is out for 1 and cleaned him up by the beauty of the delivery which is coming into the batter, Akshay, the left-hand batsman. The 6 for 1. The new batter in is Prasad DJ Lara with a nickname, and have to contribute from his bat because Akshay back in the pavilion. Yesterday he played a good innings in the UCG cricket ground for his team, the team which is came into quarter final. BSK Attavara represented in the Friends Trophy. Played at UCG in the first match. Prasad played a very good innings for his team. Now we're going to face Lakesh. Nice reverse sweep, played it in the gap, and Arun the fielder. One of the experienced campaigner, age is just a number. Lovely commitment there from Arun. Moving to his left and fields the ball. One day single for the batter. With that single score, but moves on to 7 on the board for 1 wicket. Punit back on strike. Lakesh. Punit swept the ball very nicely into the deep square leg region, but not more than a single. Prasad wants a second, but asking for trouble. 1 run, scored moves on to 8 for 1 wicket in the over number. Second is in progress. Lakesh to continue. They wanted to sweep the ball and mix up, chance of run out. And the previous match also Prasad got run out here also almost. Actually, the Prasad has got no idea where the ball is. Ball or maybe hitting his head and will try to go for the sweep shot. When Punit wants to run, Prasad is not interested. When Prasad is not interested, Punit not interested. So dot ball,
Scoreboard not remains on 7-8 correction for 1. Lakesh, quite over is in progress. Last fifth time in this over. Over the wicket, pass umpire. Oh, lovely delivery just outside the line of off stump, beaten completely. The very good over is in progress. Prasad beaten by the face. What a great over there from Lakesh so far. Wanted to go for the expansive drive. Reverse sweep, which is attempted. Wicket keeper missed it. By call by umpire after completion of over number 2. And the scoreboard is 9 on the board. Excellent over, which is comes in handy here from Lakesh. The only 3 runs came from this over. Great over from Lakesh. It's 9 for 1 after completion of over number 2. Two overs completed, 9 on the board. Rakshit brought into attack to bowl the third over. One more very talented bowler. And the team Arasu Warriors has got some very good bowling lineup in the side. Rakshit to Prasad. This time reverse play, played it in the misfield. The fielder at wide-ish, long off. He's dropped the catch and couple of runs completed. And a good attempt by the fielder in the deep long off. While he tried to take the catch, he just got a hand onto that. It almost ball is stuck in his hand, but ball at last moment, ball slipped out of his hand. Couple of runs completed, 11 on the board. Rakshit wanted to guide the ball on the third man region, completely beaten in the occasion. Rakshit, good comeback. Rakshit has got a unique style of his bowling action. And got a bowling of both in and outgoing deliveries in one action. Again wanted to go for the reverse sweep there, wanted to run there is no run at all. One more dot ball. Prasad once again trying for the reverse sweep, but didn't got success. Puneet is out of the strike, standing in a non-striker's end. Down the leg side, they're going to be a wide. And there will be a chance of another run. Can try for the run. The Puneet is not interested. Can become a 1+1. But one is single though, in the form of wide. Again wanted to go for the reverse sweep. Ball went into declared area. Leg by call by umpire. Declared means Prasad to be in the striker's end. 13 on the board in the over number 3 in progress. One more tidy over is in progress. 4 from this over so far. But the good Bulls needed some runs. Rakshit bowls. Prasad, the plum in front of wicket is gone. Rakshit strikes again. It's not so easy to play against the bowling of Rakshit. Such a wonderful performer in the ball. One more wicket back in the pavilion. It's 13 for the loss of 2 wickets. Avinash, the new batter in. Avinash, the new batter in, and a good striker of the ball. The first match he batted well, scored some important runs from the bat. But
Wanted to go for a reverse stroke. Correction, Avinash is a left-hand batsman that's wanted to go for the expansive drive. Missed it completely. Lovely over there from Rakshit. One more good over which is comes in form of for the point of view of Arasu Warriors. 3 gone and the scoreboard is 13 for the loss of 2 wicket. Last couple of overs remaining. Not a big score on the board. 13 for loss of 2 wicket. Last 2 overs remaining. Good bowling performance. Varas Warriors so far winning the toss, selected to field first. Dhanush brought in attack. One more good bowler. Great all-rounder for the side of Arasu Warriors. Came into attack from the road end. Mangalore media having a live telecast of this cricket tournament of the prestigious Attavara Premier League 2026 Season 7. Punit again wanted to go for the reverse sweep. Each and every batsman. Of course, he got a success in the first ball of the match. He played a reverse sweep and he got the boundary. But after that, not that much of success. Dhanush, second time in this over. Swings and missed. One more dot ball. So many dot balls you can see in the innings of good doubles. The cricket is not only about that hitting the balls, but sometimes intelligent cricket, which is important. Rotation of strike. Again, pulls that one down to deep mid-wicket region. Misfield there by the field. A couple of runs completed in between with that couple of runs. Kobana moves on to 15 on the board for 2 wickets. Over number 4 is in progress. Dhanush to fourth time in this over. This time chance for the fielder at deep long on. He played it very high and he drops it. Long on fielder absolutely missed that golden opportunity to take the catch of Puneet. Lucky escape for Puneet. Got a couple of runs. It's 17 for 2. Last couple of deliveries left in this over. Down the leg side going to be a wide. With that extra score, but moves on to 18 for 2. Dhanush. Opportunity for the wicket keeper. Missed it completely by the wicket keeper behind the stump. Rakshit. No run scored there. Excellent comeback by the bowler. 18 for 2 wicket. Last delivery of this over. This time one more dot ball. One more over. Excellent over. Arasu Warriors absolutely dealing with some economical overs. 4 gone. And good able still searching for the right track. Struggling in the middle. 17 for loss of 18 correction. 18 for the loss of 2 wicket. Last over remaining. Tidy bowling performance so far from Arasu Warriors. Jersey number 7 brought into attack. Sonal. Last opportunity. 2 dashing batters out there in the mid. On his big striker of the ball. Right hand batsman. One more big striker of the ball. Avinash as a left-hander. Wait and see how well these 2 batters will go in to add some runs from the bat.
Sonal. To Avinash, Abil for leg wicket, umpire not interested. Leg by call by umpire with the addition of the leg by score, but now moves on to 19 on the board for the loss of 2 wickets. Last 5 deliveries left in their innings. It's been a great bowling display in the afternoon. After that, good start from Puneet, looking for second. In comes a throw. A wide throw came from the fielder. Oh, Avinash absolutely has got a collision with the bowler. Hopefully no damage done. Avinash got up. He's got a heavy body weight. It's scoreboard now 21 for 2 in the last 4 deliveries remaining. Four balls remaining. Puneet back on strike. He's batting on double figure, 12 runs with the help of 1 boundary. Oh, this time Yorker Lentivari tried to hit the ball. Puneet's already given up. This is the final over, so that no problem. Avinash have to go for the run, but Puneet, it's too late for him to respond for that quick single, and the run out taken place. Puneet looks like slight a bit of tired with the hot sunlight in the afternoon. Very hot condition. He's out for 12 runs. Very surprising, the man who's batted brilliantly in the previous match. He's been asked to come in the number 5 batting. Kishan. They played a very good innings in the previous match. He came as opener for the side. This time they're going for the run. Chance of run out in the non-strikers, and Avinash. Umpire will going to ask for the third umpire to give the decision. The bails are off. But wait and see whether Avinash will going to be a safe or not. Let's wait and see. Is gone. He's a short of his crease. The bails are off, and at that time Avinash is short of his crease. 21 for the loss of a 4 wicket back in the pavilion. Last 2 balls left in their innings. New batter in with jersey number 10, Nelson. Sachu, the new batter in. Here comes. Ball him, clean him up.
Kishan just wanted to go for across the line. No other option at all. I have to look for the big shot. But he's just choosing a wrong delivery for that. On the middle stump, quicker one, a faster one. Wicket number 5 gone. Good Day Bulls are looking more trouble. 21 for the loss of 4 wickets. 5 wickets back in the pavilion. Now with Nelson. Both are having the same jersey number 10. Sachin and Nelson. Last delivery from Sonal. Outstanding last over is in progress. Appeal gone. Flum in front of wicket. One more great over which is comes in, and Nelson leg before wicket of the bowling of Sonal. What a great over from Sonal. 2 wickets in the 2 consecutive deliveries of the final over. And now Good Day Bulls are going to finish their innings with the 21, and they set a target of 22 to win the match for Arasu Warriors. Once again, the bowlers did a tremendous job for the Arasu Warriors to restrict that opposition. And Good Day Bulls for just 21. 22 is the target. Let's take a short break here in commentary box. We are back once again with my friend Mr. Gopi. Thank you. .22 target. धन्यवाद सतीश। तो अरसू वॉरियर्स के लिए 22 रनों का लक्ष्य इस वक्त रखा है। गुड डे बुल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 5 ओवर में 21 रन उन्होंने बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। दे स्कोर 21 रन्स फॉर लूजिंग 6 विकेट फॉर गुड डे बुल्स। नाउ द टारगेट फॉर अरसू वॉरियर्स इज 22।
they have to score for victory out of their 30 deliveries. That means they stipulated 5 overs with the help of 10 wickets. The present equation shows for them और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होते हुए और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है प्रज्वल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और धनु और विल्सन सामना करते हुए पहली गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त फैंटास्टिक डिलीवरी द बॉल बेल चेस्ट पॉइंट ऑफ द स्टंप्स और विकेट कीपर जो थे गेंद को ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में प्रसाद जो विकेट कीपर है गेंद उनको बीट करते हुए निकली उनके हाथों को चीरती हुई लेकिन बैकअप होता हुआ तेजी के साथ शॉट मैन फील्डर द्वारा विल्सन इस वक्त सामना करते हुए गेंदबाज की ओवर की अगली गेंद का दाहिने हाथ ऊपर द विकेट तैयार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद एक बार फिर से फैंटास्टिक डिलीवरी 2 फैंटास्टिक डिलीवरी बॉल बाय प्रज्वल और दोनों गेंदों में बल्लेबाज आक्रामक स्ट्रोक लगाने में असफल और ऐसे बेहतरीन गेंदबाजी की ज़रूरत है इस वक्त अगर 21 रनों के अंदर अरसू वॉरियर्स के बल्लेबाजों को रोक कर रखना है गुड्डे बुल्स के गेंदबाजों को और प्रज्वल इस बात को जानते हैं कि इस वक्त उन्हें एक नपीतुली गेंदबाजी करनी है और जहाँ तक का सवाल इस वक्त अगले गेंद का तो गेंदबाज इस वक्त प्रज्वल अगले गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट कहना पड़ेगा इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है अरसू वॉरियर्स के लिए एक रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर जो कि इस वक्त प्रगति पर दोपहर का वक्त लगभग 3 इस वक्त बचते हुए और मैच नंबर 4 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट अतावरा प्रीमियर लीग सीजन 7 2026 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ और प्रज्वल अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी इस वक्त अपील जरूर है लेकिन इस बार रन आउट का खतरा लेकिन नॉन सेकंड में काफी ऊंचा थ्रो और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज 2 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं और काफी ऊंचा थ्रो था अंतिम क्षण में और गेंद को जब तक बैकअप किया जाता लॉन्ग ऑफ पर वाइड लॉन्ग ऑफ पर बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन चुराने का और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के 3 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस और गेंदबाज प्रज्वल अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार विल्सन जो कि इस वक्त सामना करते हुए प्रज्वल की गेंदों का दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस बार गेंद को उछालना चाहा लेग स्टंप से बाहर 1 डिक्लेयर्ड और राइट्स ऑफ द बैट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 4 रनों पर बल्ले से लग कर आए हुए स्ट्रोक 1 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ 4 रन बन चुके बिना किसी नुकसान के विल्सन फिर से एक बार गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार प्रज्वल का और प्रज्वल अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए इस बार फैंटास्टिक डिलीवरी एंड फैंटास्टिक वर्क मेड बाय विकेट कीपर प्रसाद निश्चित रूप से बेहतर तरीके से विकेट को उछाला था प्रसाद ने लेकिन बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज पर मौजूद था और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के और प्रज्वल एक बेहतर लेंथ तो लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और गेंदबाज इस वक्त तैयार प्रज्वल लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा umpire द्वारा just drifting down the leg side at the last moment and a wide declared by umpire and with that wide run the scoreboard moving up to 5 on the board in the upper number first in progress अपने सही लेंथ और लाइन को तराशते हुए इस वक्त गेंदबाज प्रज्वल लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर दिशा से भटकते हुए गेंद उन्होंने फेंकी और रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला अगली गेंद प्रज्वल इस वक्त विल्सन के लिए दाहिने हाथ अराउंड द विकेट तैयार ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट वेटिंग टू द कम आउट वेटिंग टू द बॉल टू कम आउट इज बैट एंड दिस लास्ट मोमेंट एंड प्ले दैट वन वेरी वॉचफुली डोंट एक्स्ट्रा कवर फॉर अ सिंगल और पहले ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 6 रन बिना किसी नुकसान के 6 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर फॉर अरसू वॉरियर्स
chasing the victory target of 22 in 5 overs set by Good Day Bulls. Kinna Warriors will take over Brothers B in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಕಿನ್ನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕಿನ್ನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತಂಡದ ಎರಡೂ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. और गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. पहले ओवर की खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं. पावर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं और गेंदबाज इस वक्त तैयार. लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका. कुल मिलाकर 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 29 नंबर की जर्सी पहने हुए द बॉलर वेयरिंग नंबर 29 जर्सी इज नाउ कंटिन्यूइंग हिज नेक्स्ट डिलीवरी. ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त. गेंद पीछे थोड़े से फील्डर पीछे तैनात. एक मात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा. जस्ट सिंगल और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका. कुल मिलाकर 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के 8 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ दिस सेकंड ओवर. क्रीज पर मौजूद है दोनों बल्लेबाज धनुष और विल्सन अपनी टीम को एक बेहतर आरंभिक शुरुआत देने की पूरी कोशिश करते हुए. और गेंदबाज ऋत्विक गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. यह गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का. दिशाहीन गेंद थी और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका. कुल मिलाकर 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के 9 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड स्टार्टेड फर्स्ट शॉट वेरी गो. और ऋत्विक अगली गेंद लेकर तैयार. इस बार बल्ले का बाहरी किनारा पॉइंट की दिशा में गेंद पहुंची, लेकिन इससे पहले की गेंद को फील्ड कर रहे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ अब स्कोर पढ़कर पहुंच चुका 2 अंकों पर, यानी 10 रन बिना किसी नुकसान के. और ऋत्विक दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त तैयार. इस बार स्टीयर कर दिया delicately, just opening the pace of the bat at the last moment after goes on to the front foot, steering it away fine down to a gully for a single. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 11 रनों पर 11 इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस. और ऋत्विक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. सामना करते हुए धनुष यानी धनु अगली गेंद लेकर गेंदबाज ऋत्विक गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, लेकिन अंपायर ने कहा कि सीधे गेंदबाज उनके आड़े आ गए थे. तो अंपायर ने कहा कि कुछ हमें यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, असल में क्या हुआ था स्ट्राइकर एंड पर. और बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं और स्कोर रुक चुका है 11 रन पर 11 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस. ऋत्विक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. धनुष यानी धनु के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद पैरों पर गेंद टकराई. इस बीच एक बार फिर से शायद गेंदबाज उनके आड़े आ गए थे, तो अंपायर ने एक बार फिर से कहा जी मुझे ठीक तरह से दिखाई नहीं दिया. और एक बार फिर से बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं. तो 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर 12 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस. ऋत्विक अपनी ओवर की शायद अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट विल्सन के लिए गेंदबाजी करने के लिए तैयार.
इस बार बेहतर गेंद थी, पैरों पर गेंद टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े, एक बार फिर से रन मिलेगा। 3 लगातार गेंदें बल्लेबाज के पैरों पर टकराई और इस बीच इट्स ऑफ द बैट ओवर की समाप्ति। 2 गॉन एंड आफ्टर 2 ओवर स्टिल आई मस्ट से Arasu Warriors looking in a good situation. 13 runs without loss they scored after completion of 2 overs, chasing the victory target of 22 in 5 overs. Just 9 runs to get for victory in remaining 3 overs. That means in remaining 18 deliveries with the required run rate of exactly 3 runs per over. सचिन गेंदबाजी यहाँ पर प्रारंभ करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार विल्सन जो कि इस वक्त सामना करते हुए बेहतरीन अब आरंभिक साझेदार यहाँ पर जमते हुए अरसू वॉरियर्स के लिए। विल्सन और धनु के बीच पहली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, पहली गेंद स्टेयरिंग इट अवे डाउन टू अप गली एरिया, गॉन थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंप्लीटली एट लास्ट। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 14 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। और गेंदबाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। सचिन गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए सामना करते हुए इस वक्त धनुष यानी धनु ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद उछालना चाहा, चूंकि डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ। लगातार डॉट गेंदों की सख्त जरूरत यहाँ पर गुड्डे बुल्स के गेंदबाजों को कमबैक करने के लिए इस मैच में इस वक्त। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट, सचिन ऑप्शन से बाहर कट किया इस वक्त थर्ड मैन की दिशा में, एकमात्र रन 1 डिक्लेयर्ड और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 15 रनों पर, 15 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಕಿನ್ನ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ इस बार ड्राइव किया स्ट्राइट पास दी बॉलर जान टू स्ट्राइट एट एरिया, गेंद इस वक्त मिस फील्ड इस वक्त और बल्लेबाज दूसरा रन इस वक्त नहीं मिलेगा उन्हें। सिर्फ एकमात्र रन क्विकली रिकवर करते हुए फील्डर प्रज्वल जो कि लॉन्ग ऑफ पर मौजूद थे और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 16 रनों पर, 16 ऑन द बोर्ड, जस्ट 6 more runs now they have to score for victory in remaining 2+ overs। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, शॉट फाइन लेग पर गेंद पहुंची, रन नहीं मिलेंगे और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर, 16 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज अगली गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा, वाइड का इशारा, 17 ऑन द बोर्ड, लेग स्टंप से काफ़ी बाहर की ओर गेंद फेंकी थी इस वक्त, दिशाहीन गेंद थी और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 17 रनों पर, 17 विदाउट लॉस, जस्ट 5 टू गेट फॉर विक्ट्री। इस बार उछालना चाह लेकिन अंतिम क्षण में गेंद की उछाल को बातें स्टीयर कर दिया खूबसूरती के साथ थर्ड मैन पर एक रन के लिए, सिंगल टू एंड द ओवर एंड 3 overs completed, 18 runs on the board, 5 runs came from the last over. Now the equation seems to be a much easier for the batting side Arasu Warriors. Just 4 runs to get in remaining 2 overs. That means in remaining 12 deliveries. प्रसाद डीजे जो कि इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए सिर्फ 4 मात्र रन अपने विजय से दूर अरसू वॉरियर्स और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया इस वक्त, शॉट फाइन लेग पर, रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और ऐसा कहना पड़ेगा गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं यहाँ पर, वाइड की मांग की थी लेकिन अंपायर ने इसे नकार दिया और प्रसाद डीजे अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार।
इस बार उछाल दिया गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन पर प्रज्वल गेंद तक पहुंचते हुए बेहतर फील्डिंग वहां पर जस्ट सिंगल गॉट और प्रज्वल का फेंका गया थ्रो इस वक्त गेंदबाज के हाथों में पहुंचता हुआ 19 ऑन द बोर्ड नाउ 3 टू गेट फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 10 बॉल्स प्रसाद फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार इस बार हल्के से गेंद को खेल दिया जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट एंड ड्रिवन दैट वन परफेक्टली डाउन टू कवर पॉइंट फॉर अ सिंगल विद दैट सिंगल that single brought more nearer to the victory for Rasum Warriors. Now the score is exactly 20 और प्रसाद डीजे अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार ऑन साइड पर मोड़ा मिड विकेट पर he's got a single. That's it. The scores are now leveled. Now just one run required for Arasu Warriors for victory against Good Day Bulls. सिर्फ एक मात्र रन की दरकार लेग स्टंप से बाहर लेकिन कुछ ज़्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकलते हुए और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 21 रनों पर और गेंदबाज लास्ट बॉल अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी और 7 गेंदें इस वक्त बाकी उनकी पारी में lofted and over the fielder set at long off. He just finished the match in a style with a boundary. So comprehensive victory by 10 wickets for Arasu Warriors. A big victory for them by 10 wickets with more than with the exactly 6 balls to spare. That means exactly 1 over to spare in their innings, and they reached the target of 22. 25 without loss they scored. Winning shot came from the bat of the batsman Wilson, and they won the match comprehensively by 10 wickets. 10 wickets, big margin victory for Arasu Warriors against Good Day Bulls in the match number 4 of this prestigious cricket tournament, Attavara Premier League Season 7 2026. What a fantastic tournament is now progressing here. Next match, brothers Babu Gudda will take over Kinna Warriors. Match number 5 is now going to start. And I request the captains of these two teams please come in front of the stage for the toss procedure with organizer. Match number 5 is now going to start between Babu Gudda ब्रदर्स बाबू गुड्डा वर्सेस किन्ना वॉरियर्स. वी आर जस्ट टेकिंग ए शॉर्ट ब्रेक. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब मैच नंबर 5 शुरू होगा इस श्रृंखला का. किन्ना वॉरियर्स ने टॉस जीता है और देखते हैं क्या निर्धार वो लेते हैं. एक छोटे से ब्रेक के बाद सतीश के साथ अंग्रेजी में हम आपके सामने उपस्थित होंगे. तो अब वक्त है कि ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद.
Sanjay and Latish, the opening batters. In the middle, Sushant will going to start the proceedings for the team Kinna Warriors. Here comes the first ball, Sushant from the road end, right arm over the wicket. The first ball swept in very nicely in the deep fast square leg region. And one declared quite unfortunately for Sanjay, because behind the stumps, not too much opportunity for the batter to get the runs. One without loss of any wicket. Sanjay is off the mark. And the team brothers Babagudda is also off the mark with a single. One without loss of any wicket. Sushant. Right arm over the wicket balls. Once again the dot ball. One without loss of any wicket. Third time in this over. Right arm over the wicket. Bowls to this time. One more wicket. The first wicket back in the pavilion. Sanjay has got a confusion. And probably umpire Roland Pinto is absolutely walking towards square leg umpire. Maybe Sanjay saying that the ball which is not in the hands of the bowler. And the third umpire has been asked. Umpire will go into watch whether it is cleanly collected or not. Just wait and see. Umpire Suresh Mude will go into watch what could be the addition, whether it's going to be a fair addition or not. Try to take a very risky single. Good throw came from the fielder. Sushant uprooted the stumps, even along with the ball or not. Just wait and see whether he's got a ball in his hand, whether he got touches the stumps or not. Wait and see. Third umpire going to watch here. Brothers Babagudda playing their second match. The first match, which is a tie match, they got 1 point. And the Kinna Warriors, they lost their first match. And they're playing their second match. Out is gone. And along the ball is uprooted the stumps. And that's why umpire Roland Pinto, experience of him, he cannot question sometime, because every time he's getting into the very good position. And after getting a position only, he will going to give the judge, because technology is advanced in the last 5 or 6 years back. Before that, umpires in the naked eye, they are all giving the decision, the fair decisions. Sanjay back in the pavilion replacing him.
the new batter in. Now Sanjay will going to take the strike. Sushant again played it down to long on region for easy single. With that single score, but now moves on to 2 on the board. Brijesh is a new batter in. Shishant to Brijesh. Across the line, appeal for leg before wicket. This time something in the strikers end, but nothing has happened. Just an excitement rather than the confidence. Now umpire has got some confusion. They have a conversation. Suresara. It's a bowled out. Unfortunate dismissal for Brijesh. Unusual kind of dismissal for Brijesh. And the ball hits the stump. And Sushant got a wicket. New batter in is Dion. For the team Babu Gudda brothers. Sushant strikes in his first over. 2 wickets already. One is run out and second one is bowled out. Again appeal for leg before wicket. And umpire will go into say it's from the bat. Nothing has happened. One more runs added to total. With that score moves on to 3 on the board for the loss of 2 wicket. Excellent start there from Shishant for the team Kinna Warriors. It's 3 for 2. Shackling start for the team. Babu Gudda have to come back very strongly in the remaining overs. Both the teams desperately wanted the victory. Kinna Warriors lost their first match in the league. Brothers Babu Gudda, they tied the match. They got only 1 point in the points table. The bowler brought in to attack the ball the second over. Atul. Atul
Bowling with a short run of right arm over the wicket to Dion. Lovely shot, lofted extra cover drive. The fielder in the deep, excellent piece of fielding by Santosh. But couple of runs completed before Santo will go and return that throw. Excellent work done by Santo in the deep extra cover region. Couple of runs completed. Outside the off stump going to be wide. One more extra. Abhiram, the batter. Wide outside the line of off stump, and Skobert moves on to 6 for 2. Again, played it gently down to point region for a single by Abhiram. With that single, Skobert moves on to 7 on the board for the loss of 2 wickets. Slowly and steadily, the batters of Babu Gudda brothers just wanted to partnership going. Full toss, half-hearted pull shot. The fielder will going to take the catch on stage. It looks like he will going to misjudge that one. But he's just kept his eye on the ball. Loose stroke played by the batter Sanjay. The full toss ball, half-hearted full shot. Pays the penalty for that. Latish departs correction, and wicket number 3 gone. 7 for 3. More trouble for team brothers Babu Gudda. Just number 28. Manikanta left-hand batter came into middle. It's a successful over from the bowler Atul so far. Got a vital breakthrough for his team. ದಯಮಾಡಿ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಜರ್ಸಿ ಹಾಕಿದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ, ಫೀಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ನಿಂಡಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನಿಂದ. ಎಸ್, this time pulls that handsomely and he got the distance. Manikanta got that to loose delivery, short pitch one. All the time in the world for him to pick that one right from the middle of the bat. Dispatch that one into the deep square leg boundary for a maximum. Much required 6 for the brothers Babu Gudda. And Skobert now moves on to 13 in the over number. Second is in progress. The much required big stroke came from the bat of Manikanta. Atul Boss once again, he lofted into the deep mid-wicket. One bounce into the fence for 4 runs. The intention of Manikanta is very clear that he just wanted to go after the leg spinner Atul. Again the short pitch delivery. And the placement is exquisite from the batter Manikanta. With that bound, Skobert moves on to 17. Outside the line of off time, well with the reach. No, it's a wide call by umpire. The umpire wanted to take the review. Review taken by wicket keeper. He's confident that the ball is a fair delivery. Umpire called it wide, and wait and see what could be the decision from the third umpire. 2 big strokes came from the bat of Manikanta. Really brought brothers Babu Gudda back in the game after that shackling start in the first over. And even they lost the wicket in the second over. So wide which is confirmed, and the review which is lost.
for the fielding team. The wide which is confirmed. 18 on the board for 3 wicket. So it's a wide delivery. So Atul to continue. Have to reball. Loft it. And this one fielder. Oh, misjudgment. Absolutely sloppy fielding there by the fielder in the widest long on. Straightforward catching chance which is gone in vain. The very expensive over which is comes to the idea of Atul. 19 runs came from this over. The just the number of the players of Kina Warriors. And after completion of over number 2, 22 for 3. Unbelievable comeback from the batters of Manikanta, batters of brothers Babagudda from the bat of Manikanta. 1-6 in couple of boundaries. Very useful left-hand batsman. Raghu brought into attack to put some break on the run rate of their opposition. They're going exactly 11 runs per over after completion of over number 2. Raghu to Abhiram. That's I want to see the fields at the fielder at deep square leg, one fielder at mid on, one at forward short leg. And now he's coming into the short mid wicket. Deep long off and long on. Deep mid wicket. Short cow point, Mohan. Lovely delivery, Raghu. Bowled a beautiful quick half-cut leg cutter and completely beaten Abhiram. No runs scored. 22 for the loss of the 3 wickets in the over number 3rd is in progress. Raghu, second time in this over. Bowled him around the legs. And Abhiram just misjudging the leg cutter, just tried to get the sweep shot. He missed it, but not the bowler. And beautiful leg cutter again from Raghu around the legs of the batter. One more wicket back in the pavilion. The 4th wicket gone. Abhiram departs. 22 for 4 now. Azim, the new batter in. The game changer in the previous match with this excellent effort in the bowling and the fielding. Akhtar, correction. Akhtar, the batter, correction. Behind his jersey, they written the name as Azim. Akhtar, the game changer. In the previous match, if the match they wanted to tie, this man's contribution is a huge with the ball and the fielding. And now we're going to face Raghu, the experienced bowler. Got a vital breakthrough in the previous delivery with a beautiful leg cutter around the legs. Akhtar will go into face Raghu. One declared, just flicks the ball off his legs down to find aggression. Akhtar is off the mark, and with that single score moves on to 23 for the loss of 4 wicket in the over number 3rd is in progress. Raghu bowls. Defensively played off the back foot down to short mid-wicket region. Raghu really bowling as per his field. Not really let the batsman to settle for any kind of big shots in this over.
appeal. Umpire says not a chance of run out. Even though LBW appeal is denied by the umpire, but the wickets are fallen in the form of run out. Akhtar just wanted to go for the blind run, and Raghu returns the ball very quickly to the hands of wicketkeeper. He completes the formalities, and the scoreboard still remains on 23 for the loss of 5 wickets. Dion now came into bat here, replacing Abhiram's the wicket which correction the previous dismissal. Akhtar back in the pavilion in the form of run out. Oh, lovely delivery from Raghu, defensively played by Dion. Very watchful. What a wonderful over there from Raghu. Only 1 run and picked up a wicket. 1 wicket and 1 run out. After completion of over number 3, brothers Babaguda are 23 for the loss of 5 wicket. Manikanta still there in the middle. Manu changed the game in the second over. A very expensive over which is bowled by Atul in the second over. Bowler brought into attack, Santu with the jersey number 19. For Manikanta, spread out field set. For 5 fielders outside the circle, saving the boundaries. Deep square leg, deep mid wicket. Long on the fielder down at extra cover. Deep extra cover. A very interesting field set. There are still 5 fielders inside the ring. Short fine leg, square leg, short mid wicket, mid on and mid off. Santosh to Manikanta. Down the leg side, single wide, single by umpire, 1+1. Couple of runs added to total 25. Quarter century for Babu Gudda. In the over number 4 is in progress. All we can see that some extras also helping the team Babu Gudda to get into the good total against the Kinna Warriors. Drives that one. Raghu, the fielder, the quick fielder, pick up and throw. Excellent walk. Came right across Atul, but he's very confident he will going to field the ball neatly. Neat collection and throw. 26 for 5. Dion to face. Right arm over the wicket. Pass on by Suresh Mudabidri. Again, the highly indisciplined bowling performance from Santosh. One more wide. With that extra score, moves on to 27.
One more wide. He's really struggling to get his line and length. As again, if the ball which is going far outside the line of off stump, with that extra score, but now moves on to 28 for 5. All bonus run for the team Babagudda in this particular over by Santosh. Gently played it down to short mid wicket. Misfield there by the fielder. They get up this opportunity, convert that single into couple now. Like a placement, nice timing, but placement is not good enough. Dion timed it beautifully. And the bowling of Santosh, but the ball went straight to the hands of short mid off. With the straight bat, he played it nicely. Oh, extra bounce in irrigation, and the ball will going to travel to the declared area. One declared by umpire. So 31 for 5. The over number 4 is in progress. Dion to face Santosh. Good score on the board for team brothers Babagudda. Again, no wide. Highly indisciplined bowling performance from Santosh. So many wide deliveries. 32 for 5. Prolong over. 4 wides in this over. Time is exactly 3 past 40 in the evening. Still, it's a bright sunny evening here in MA Cricket Ground. Stuff the ball very nicely in the gap. The chance of run out in the non-striker's end, but again the bowler fails to collect the throw from fielder. Leg by called by umpire. And with that leg by Scobert Namozan to 34 for the loss of 5 wicket in the over number 4 in progress. Exceeds the time limits. The fielding team taken a lot of time. Have to bring one fielder inside the ring as far as the penalty is concerned. Down the leg side. One more. This is the 5th wide of this over. 35 for 5. Santosh. Appeal for leg wicket, not interested by umpire. Dot delivery is a prolonged over. Big over. The over of almost 11 deliveries. After completion of over number 4, it's 35 for the loss of 5 wickets. Team brothers 35. 4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ
Shreyas brought in attack to bowl the last over. And Manikanta, man who responsible for that much of score, is back on strike after a long time. Shreyas with a run-off passes umpire Roland Pinto. The far outside the line of off-ramp. How many runs they given in the form of extras? 1 plus 1. 37 on the board. Still they have got a 6 deliveries to spare. So much of excess conceded by the Kinna Warriors in this particular match. The previous over 5 wides in this particular over. Shreyas starts with a wide. Dion to face. One more extra. My goodness. 38 on the board. $39. Almost a evening exercise for the umpires Roland Pinto and Suresh Mudabidre by the bowlers of Kinna Mangalore. Kinna Warriors, the bowlers absolutely not showing any discipline in the bowling. Twelve extras already. One more wide. Extra number 13. Extra number 15 in fact. 13 wides out of that. That means this is not a 5 overs game. It's a 7 overs game already. For the Babugoda brothers. This is what the bonus gift from the bowlers of Kinna Warriors. Shreyas balls this time. A good delivery. Chance of run out. Wicket keeper misses the stump. Good backup by the fielder. By call by umpire. Leg by. And with that leg by, Skoban moves on to 40 on the board. Still 5 more deliveries left in their innings. It's a big one. Taken a lot of time to complete the 5 overs. Chance here for the fielder to take the catch. Neatly taken by the mid-off fielder. Manikanta's entertainment innings which is comes to an end. Just he wanted to go off over the top of the infield and couldn't manage to get that elevation what he's looking for. And the fielder making no mistake at all at mid-off. Wicket number 6 gone. Manikanta's innings which is comes to an end. The good contribution from his bat. 6 and a couple of boundaries from his bat. Excellent knock. $41 for the loss of 6 wicket. Nishant, the new batter in. Shreyas.
One more wide. 42 on the board. Extra number 17. Defeats the bat of the batter. Wicketkeeper missed it. By call by umpire. When bowlers bowls a good delivery, wicketkeeper not supporting in behind the stump. 43 on the board. Still 3 more balls left in this over. Shreyas to Dion. Dion tries. Will going to pick a single then. Looking for second. Nishant running very well along with the Dion. Good running between the wicket. Excellent running between the wicket. Score moves on to 45. The huge total on the board for brothers Babu Gudda. Last couple of deliveries left in this over. Shreyas. Swings and missed. Opportunity of run out in the non-strikers and Nishant have to walk. Umpire saying again they exceeds the time limits. One more fielder need to be inside. Neetu, the new batter in, but this is the last delivery, and Dion will going to face the last delivery. Shreyas, one more prolonged over is in progress. Drives into the backward point region. They're looking for second, and they managed to complete that couple of runs quite easily. So very good runs here for the Babu Gudda. Brothers Babu Gudda will going to finish with the 47 runs, and they set a target of 48 to win this match for Kinna Warriors. Really, it was a highly indisciplined bowling performance. So many extras conceded by Kinna Warriors bowler. And now they are in a trouble, and they have to get 48 runs to win this match against Brothers Babu Gudda. Good hand from each and every batsman to get these runs. It will take a short break here, and a short break, my friend Gopi will going to take over the microphone. Thank you.
Absolutely misjudgment made by the deep mid wicket fielder. ना सिर्फ गेंद उन्होंने छोड़ा बल्कि छक्का भी माफ कीजिए चौका भी इस वक्त प्रदान किया उन्होंने. ना सिर्फ इस कैच को उन्होंने छोड़ा बल्कि चौका भी प्रदान करने में सफल मिसफील्ड की वजह से. अब the things getting much easier now for the batting side. Kinna Warriors 25 the score. That means 23 runs more now they have to score for victory in remaining 15 deliveries. 15 गेंदे 23 रन चाहिए और दोनों बल्लेबाज रघु और अखिलेश कुछ बातचीत करने के बाद अपने स्थान पर लौटते हुए और गेंदबाज मणिकंठा अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. कुछ हद तक महंगे साबित हो चुके हैं. पहले 3 गेंदों में 11 रन प्रदान कर चुके, अंतिम 2 गेंदों में 10 रन प्रदान कर चुके, एक छक्के और एक चौके के रूप में. बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहा विकेट कीपर क्या तो मैं गेंद रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. इन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 25 रनों पर 25. और मणिकंठा फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद टॉप एज और गेंद इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर हो सकती है. इस वक्त नहीं गेंद को रोका गया है. 2 रन प्राप्त कर चुके, तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 3 रन प्राप्त करने में सफल. मिसजजमेंट होता हुआ डीप मिड विकेट फील्डर द्वारा और 3 रन बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल. What a fantastic batting display continuing here from the openers of Kinna Warriors. Now 28 the score. That means exactly 20 required in remaining 13 balls. 13 गेंदें बाकी 20 रन चाहिए. And this is an absolutely terrific start given by the openers Raghu and Akhilesh for their team Kinna Warriors. और the bowler is now looking under pressure. मणिकंठा बाएं हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, शॉट टर्नमैन पर 1 रन मिलेगा. 1 run added in the face of leg by 29. Now 19 runs to get from 2 overs. That means in remaining 12 deliveries. What a fantastic run chasing making by the openers of Kinna Warriors Raghu and Akhilesh. 29 runs scored in the first 3 overs. Just 19 runs to get from remaining 2 overs. That means the required run rate is now exactly 9.5 runs per over in this situation for them. तो इस वक्त कुछ हद तक बातचीत चलती हुई किन्ना वॉरियर्स के खिलाड़ियों के बीच में. ऐसा कहना पड़ेगा ब्रदर्स बाबू गुड्डा के खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए और दोनों बल्लेबाज पानी ग्रहण इस वक्त करते हुए और इस बीच सामना करने के लिए तैयार रघु. जबकि गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए अख्तर. जहां तक अख्तर का सवाल है, पिछले मैचेस में बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया और 2 बेहतरीन कैचेस भी उन्होंने लिए थे. ಎಸ್ಕೆಬಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. तो इस वक्त ड्राइव किया, इस बीच बैक टू द बॉलर की दिशा में रन नहीं मिलेंगे. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಸ್ಕೆಬಿ ಹಾಗೂ ಅರಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅರಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಕೆಬಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, loaded, chance and taken comfortably. Brilliantly held by the fielder at mid-on. और इस विकेट के पतन के बदौलत राघु की बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका है. Is out of being playing a good knock for the side. 2 deliveries bowled in this over. 2 good deliveries bowled by Akhtar. The scoreboard stays at 29. 19 to get now from remaining 10 balls. 10 गेंदें बाकी, 19 रन अब चाहिए विजय के लिए. सुशांत बैट्समैन is now comes out to the middle. और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार निश्चित रूप से कि 1 या 2 छक्के की या चौके की सख्त जरूरत है यहाँ पर कमबैक करने के लिए बल्लेबाजों को. और गेंदबाज इस वक्त अख्तर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए सुशांत के लिए.
Again, this reverse shot खेलना चाहा, dot get delivery. 3 dot balls in a row, bowled by Akhtar. Now the equation seems to be stiffer now for the batting side. 19 to get from 9 balls. और अख्तर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट तैयार और फील्डिंग में कुछ हद तक विकेट कीपर जमावट इस वक्त करते हुए डीप कवर पॉइंट पर ठीक सीमा रेखा के पास एक फीडर तैनात लॉन्ग ऑफ डीप कवर पॉइंट डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेकर डीप मिड विकेट तैनात ठीक सीमा रेखा के पास गेंद को ड्राइव कर दिया बेहतर गेंदबाजी वन मोर गुड डिलीवरी फ्रॉम अख्तर 4 dot balls in a row and now straight away the pressure on the batsman now 8 गेंदें बाकी 19 रन चाहिए विजय के लिए 19 runs to get in remaining 8 balls. This is going to be a really testing time for the batsmen of Kinna Warriors in this situation. और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का तो गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और बल्लेबाज जो कि गेंद की परीक्षा इस वक्त करते हुए और गेंद की परीक्षा करने के बाद गेंद को लौटाते हुए गेंदबाज के हाथों में अख्तर दाहिने हाथों पर द विकेट तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए यह गेंद इस बार ड्राइव कर दिया गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद पहुंचे फील्डर गेंद का पहुंचते एक रन बल्लेबाज को मिलेगा दूसरा रन लेना चाहते लेकिन नहीं मिलेगा बेहतर फील्डिंग और बेहतर थ्रो बेहतर कलेक्शन जस्ट अ सिंगल ही गॉट 30 नाम अखिलेश बैक ऑन स्ट्राइक और देखते हैं अख्तर के अंतिम गेंद का वो किस तरीके से सामना करते हैं 18 रन चाहिए 7 गेंदें बाकी 18 टू गेट फ्रॉम 7 balls. Akhtar last time in this over down the track misses wicket keeper misses they gone through for a misunderstanding that wasn't a certain single at the last moment निश्चित रूप से सिंगल था लेकिन इस वक्त अखिलेश ने कुछ खास दिलचस्पी यहाँ पर नहीं दिखाई ओवर की समाप्ति 4 overs completed 30 on the board that means 18 runs to get from last over and what a fantastic over came from Akhtar who conceded just a single run in this over and he also picked up 1 wicket and because of this over I must say brothers Babu Gudda are now back in the game. They're looking right on top in this situation. But the match is not yet over. Miracle batting in the last over can brings the victory for Kinna Warriors. लेकिन विजय प्राप्त करने के इस अंतिम ओवर में मैजिकल बैटिंग चमत्कारी गेंदबाजी की जरूरत चमत्कारी बल्लेबाजी की जरूरत है किन्ना वॉरियर्स के बल्लेबाजों को मैच निर्धारित ओवर लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार मैच डिसाइडिंग ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स मिथुन गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए 18 टू गेट फ्रॉम 16 ओवरीज सुशांत सपना इस वक्त करने के लिए तैयार फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए और गेंदबाज सुशांत 6 balls 18 runs required first ball of the last over of the innings is now coming up और इस वक्त मिथुन गेंदबाजी करेंगे सुशांत के लिए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार था इन्हें हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद ये गेंद lofted but this time not quite mid a chance and taken by the fielder at mid on and wicket lost in the important stage of the match for Kinna Warriors and with this whistle I must say the equation seems to be stiffer and stiffer for them. The batsman Sushant departs and now it's 30 for the loss of 2 wickets. ಎಸ್ಕೆಪಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅರಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೈದಾನದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ इस बीच गेंदबाज ये गेंद ड्राइव कर दिया गेंद इस वक्त मिड ऑन की दिशा में और इस बीच एक रन बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल देन को ठीक तरह से कलेक्ट करने में सफल गेंदबाज एक रन का इजाफा स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 31 नाउ 17 टू गेट फ्रॉम 4 डिलीवरीज 17 रन चाहिए 4 गेंदें बाकी अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके और छक्के यहाँ पर किन्ना वॉरियर्स को इस मैच में वापस ला सकते हैं
और जहाँ तक सवाल है इस वक्त ಎಸ್ಕೆಬಿ ಹಾಗೂ ಅರಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. सेवनटीन टू गेट फ्रॉम 4 बॉल्स और बल्लेबाज अपना बल्ला यानी बैट बदलने के बाद नॉन स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं और सपना करते हुए इस वक्त अखिलेश और गेंदबाज इस वक्त तैयार. मिथुन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. मिथुन इस वक्त ये गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, चूके रन इस वक्त दौड़ पड़े, रनआउट का खतरा और डायरेक्ट हिट इस वक्त लग चुका है. डायरेक्ट हिट एंड द बैट्समैन इज नाउ बैकिंग टू पेविलियन. नाउ द लास्ट चांस इन फ्रंट ऑफ the batsmen. 17 to get from remaining 3 deliveries. Almost 3 sixes required in the last 3 deliveries. And this is turning out to be a 1 over fantastic over so far from Mithun. And brothers Babu Gudda's point of view is now progressing here. Three balls, 17 runs required. मिथुन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज कविश जो कि सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथों पर विकेट. ये गेंद इस बार फुल टॉस, नॉट क्वाइट मिड विकेट. इन फैक्ट इट जस्ट गॉट अ सिंगल. स्पन होते हुए गेंद पहुंचती कवर पॉइंट पर, एक रन मिलेगा. दूसरा रन, रनआउट का खतरा और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है. कविश इज नाउ बैकिंग टू पेविलियन. 1 run added and a wicket lost. 32 for 4 now. And now 2 balls left, 16 runs to get. Arasu Warriors are won the toss in the next match, and what the decision they will take, just we have to wait and see. Against SKB cricketers. Two balls, 16 runs required. अगर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड न फेंके तो यहाँ पर ब्रदर्स बाबू गुड्डा के विजय निश्चित है इन 2 गेंदों में. लेकिन क्रिकेट में ऐसा कुछ करना मुश्किल है जब तक आखिरी गेंद न फेंके जाए. क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल है. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज. और अगर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड इन 2 गेंदों के दरमियान फेंकते तो शायद बल्लेबाज के लिए एक छोटा सा मौका यहाँ पर क्रिएट हो सकता है. और देखते हैं यहाँ पर गेंदबाज क्या करते हैं. 4 बेहतर गेंदबाज मिथुन इस वक्त फेंक चुके हैं. 5वीं गेंद लेकर तैयार. बाएं हाथ के बल्लेबाज अतुल इस वक्त सामना करते हुए चूके इस वक्त डॉट गेंद. और इसी के साथ अब ऐसा लग रहा है सिर्फ और औपचारिकताएं ही, फॉर्मेलिटीज बाकी रह गई है इस मैच में. लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप. 16 टू गेट फ्रॉम लास्ट बॉल. मिथुन बॉल्स lofted down to mid wicket and it's crossed the fourth defense for a boundary, but that is not enough for them. They lost the match by 11 runs. So well fight back made by the batsmen of Kinna Warriors. They're chasing the huge target of 48 in 5 overs. They managed to score 36, but well fight back made by the batsmen of Kinna Warriors. And at last, 11 runs victory, 11 runs thrilling victory for brothers Babu Gudda against Kinna Warriors, and with that 11 runs victory, brothers Babu Gudda back the complete points. Match number 5 has been came to an end. Match number 6 is now going to start between SKB Cricketers versus Arasu Warriors, and Arasu Warriors are won the toss, and about the decision they will take, just we have to wait and see. Match number 6 of this prestigious cricket tournament, Attavara Premier League Season 7 2026 is now coming up live exclusively in front of you within just short while between SKB Cricketers versus Arasu Warriors. So we are just taking a short break, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित होंगे अंग्रेजी में मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ, जब यहाँ पर SKB Cricketers और अरसू वॉरियर्स की पारी की अरसू वॉरियर्स के बीच की मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी मैच नंबर 6 के रूप में. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद.
Welcome back for the match number 6 between SKB Cricketers versus Arasu Warriors. Winning the toss, captain of Arasu Warriors, they elected to field first. The opening batters already made their way to the middle of the pitch for SKB. SKB, so far they are unbeaten in this tournament. They won 2 matches respectively in their opening league matches. And Arasu Warriors so far out of 2 matches, 1 tie match, 1 win for Arasu. They got 3 points in the points table, and that means this is a battle between 2 unbeaten teams of the league stages will go into clash here each other. Sunil and Dhanush, the successful opening pass. The first ball, lovely delivery, starts with the second delivery. Wilson bowls, and Sunil is off the mark in the first ball, and Dhanush, the first delivery for him, which is a dot, the third time in this over. This time now lovely shot, played it down to deep long off region for a single. Dhanush is also off the mark, 2 without loss of any wicket. Sunil is in a terrific touch in this particular tournament, and they will go into face Wilson. Take one of the formidable bowling lineup what Arasu Warriors has got. And they're absolutely unbeaten because of that contribution from the bowlers. The Wilson always starts good with some excellent line and length. And here also, just a couple of runs so far in 4 deliveries. 5th time in this over. Some straight to the oh my goodness! Can you believe this? You are not only drop the catch, you are dropping the match. You can't give the life for the batter like Sunil. It's a straightforward opportunity, straight to the hands of mid-on. And very unlucky, the Wilson. What could be a wicket-taking delivery? It went the efforts which has gone in vain. So wait and see how Sunil will going to take the advantage of that life. Wilson. Final time in this over. Loved it! Just like I mentioned, you can't do the mistake of giving life to the man. Sunil loved it at one and somebody into the deep long on boundary. The vacant area. And much required boundary which is came in this over. But still I think is a good over. Because the 6 which is came from this over of Wilson, but 1 drop catch is costing a lot for the Arasu Warriors. Lakesh, the new bowler in. Wait and see how Lakesh will go into bowl the second over. 6 for no loss. 6 for no loss in the over number first, which is completed. Second over starts. Dhanush will going to take the strike. Lakesh pass umpire Roland Pinto just wanted to get that sweep, reverse sweep. He got a bottom edge of the bat. And 1 more single. With that single, Skobana moves on to 7 on the board for no loss. Lakesh with a short run off. Pass umpire right arm over the wicket. Played it nicely into the deep extra cover region for a single. With that single, Skobana moves on to 8 on the board. Sunil is batting on 5 with the 6 in fact with that alpha of 1 boundary. Now Dhanush back on strike. Lakesh
Short enough. This time wicket keeper fumbles. Rakshit fails to collect that beaten delivery by Lakesh by call by umpire. One more run added to total 9 without loss of any wicket. Mangalore media having a light cost of this cricket tournament under the great leadership of this gone now is given him Sunil right in front of medal stamp. He departs and even though he got a life, but after that he got one boundary and Lakesh struck him right in front of medal stamp. Wicket number first gone. It's 9 for 1. Lakesh strikes. Nihal, new batter in. One more very talented, technically very sound player, Nihal. They came in number 3 position as a batter, Lakesh. This time played it down to short mid-wicket region for a single. With the addition of that single, Skobana moves on to double figure 10 on the board for the loss of 1 wicket. In the over number second is in progress. Successful over. Lakesh got a vital breakthrough for his team. Now we go on to Tanusha and play it down to square leg. Find a great chance of run out. Umpire says not out, rightly so. And quite hardly Nihal managed to complete that run after completion of first over, second over. And good one there from Lakesh. Wicket taking as well. And it's 11 for 1 after completion of over number 2. 5.5 runs per over. The run rate progressing. SKB ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಗುಡ್ ಡೇ ಬೌಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಿನ್ನ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗುಡ್ ಡೇ ಬೌಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಿನ್ನ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. Rakshit brought into attack with the jersey number 10 and they will go into ball right arm over wicket. For Dhanush, deep square leg, mid wicket, long off, long on, and deep cow point deflected from a leg of the batter, or it's from the bat. It's from the bat and single in the declared area. 12 for 1. Excellent bowling attack for Team Arus Warriors. One more very quality bowler is in action. Rakshit, second time in this over. Bowled him, cleaned him up. Beautifully bowled. And Dhanush just tried to hit that one across the line. Just pays the penalty for that. Wicket number 2 gone. Both the opening batters are in the hut. It's 12 for 2. New batter in Shiv Prasad. Shiv Prasad, the new batter and good striker of the ball. Nice steady one towards long off region wideish. Is off the mark with a single. Skobada moves on to 13.
Two very good batters out in the middle. Rakshit to continue. As Plum in front of wicket, no doubt at all. Absolutely Plum. And Nihal just tried to play across the line, pays the penalty for that. Rakshit strikes, one more lovely delivery from him. Back-to-back wickets. What an outstanding delivery there from Rakshit to dismiss Nihal. The new batter in is Ajay to walk towards the middle. Thirteen for the loss of 3 wickets. Rakshit bows. Ajay left the ball right. So wide call by umpire. One more extra. 14 on the board. 14 for the loss of 3 wickets. Appeal for leg wicket again. The ball just going to miss the leg stump. Leg by call by umpire. One more addition. With the addition of that extra, scoreboard now moves on to 15 for the loss of 3 wicket. Shiva Prasad back on strike. Rakshit nicely behind the line of the ball. Good cricket there from Shiva Prasad. Will going to keep the strike for the next over. 3 gone. Successful over. 2 wickets in this over for Rakshit after completion of over number 3. Arasu, of course, winning the toss, elected to field first. And scoreboard is of SKB. 16 for the loss of 3 wicket. Last 2 overs remaining. Danu brought on the attack. Danush to bowl the penultimate over, the 4th over of the innings of SKB cricketers. Shiva Prasad is on strike. This time lofted, high up in the air, long on, fielder takes a catch. He played it very high, just missing the timing what he's looking for. And Dhanush strikes with the one more big wicket of team SKB cricketers. Shiva Prasad departs, one more big wicket, one more big fish in the net. Dhanush, very happy face we can see here. You know exactly a short pitch delivery there, and Shiva Prasad couldn't manage to get the distance what he's looking for. 4th wicket back in the pavilion. New batter in is Kiran walking towards the middle in the place of Shiva Prasad. The breakthrough from Dhanush. Here comes Dhanush again to Kiran. Played it nicely into the long off region for a single.
with the addition of that single scoreboard, now moves on to 17. The scoreboard is moving after a long time. 17 for 4. Danush to Ajay down the leg side, going to be a wide +1. The bonus run for SKB cricketers. A couple of runs and 19 now. 19 for the loss of 4 wicket in the over number 4 is in progress. One more wide. One more wide +1. Couple of runs. 21 now. The first time seeing that bowlers of Aros Warriors conceding such kind of extras. So far every bowler did a great job. This time lovely stop there from Arun, using his feet to stop the ball. Excellent work. The one more addition, 22 for 4. One more single, 25 for the loss of 4 wicket. 23 for 4. Danush to Ajay. Ajay again doesn't get hold up then properly. They're running quickly. Looking for second. In comes the throw from the field. A lovely throw. Pick up and throw came from the fielder from the deep square leg. Excellent one. The jersey number 17 did a lovely job to pick the ball, to return the ball quickly to the hands of wicket keeper. Wilson from the deep square leg region. Excellent throw from him. One more wicket back in the pavilion. 5th wicket gone. It's 24 for 5. Ravi, new batter in. Danush, beautifully balled. And no wide deliveries and our commentary box in the square angle so that they're very difficult to read the line of the delivery. One more dot ball. Excellent delivery to finish the over number 4. It's 25 on the board. 25 for the loss of 5 wickets back in the pavilion. Last over remaining in the innings of SKB cricketers against team Arosu Warriors. 2 unbeaten teams are battling here in their league stage matches, start matches. They're playing their third matches respectively. Wait and see which team will going to continue their winning track. Sonal, the bowler, brought in attack. So Sono to continue. To Kiran, the last over, the first ball. Beautifully balled, appeal for leg before he get deflected from his leg, and the leg by call by umpire with that extra score, but moves on to 26. Second time in this over. Full toss and driven that one into the mid-on region. Looking for second. Lovely collection and throw from the fielder in the deep. The batter have to settle for a single. 27 for 5. Last 4 balls remaining. Ravi back on strike. Sonu. Third time in this over. And wanted to go for the sweep shot. The wicketkeeper has got no idea where the ball is. Leg by call by umpire. One more run added to total 28 for the loss of 5 wicket. Last 3 balls left in this over. Sonal. Again played it down to square leg region. They're running hard, looking for second. Wilson once again with the arm.
Once again with the golden arm. And lovely throw again. And Kiran short of his crease. One more wicket back in the pavilion. 29 for the loss of 6 wicket. The last couple of deliveries remaining. Ashwit is the new batter. The youngest player of this tournament, walking towards the middle with the jersey number 15. Ashwit for SKB Warriors. Last couple of delivery remaining. Sonal to continue. Couple of deliveries left. Last 2 balls remaining. Sonal to Ashu. Full toss, nicely played it down to point region. Good placement, good return as well, but not good enough to stop the couple of runs. Excellent cricket there from young man. He won that full toss. He just wanted to place that one very well. Very important couple of runs. 30 on the board. You need to appreciate the braveness of this young talent. The last delivery now. Sonal to Ashwath. Wanted to swing that one. Wicket keeper missed it. By call by umpire. One more extra. And with that extra score, but moves on to 32 for 6. That means 33 is the target. 33 is the target for the team Arasu Warriors to win this match. And both unbeaten team will go into battle here. And wait and see which team will go into continue their winning track in the middle. And 33 is the target. Wait and see how Arasu Warriors will go into get this total. We'll take a short break in commentary box. After short break, my friend Gopi will going to take over the microphone in Hindi language. Thank you.
धन्यवाद सतीश। तो इस वक्त पहली गेंद लेकर तैयार, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, और जहां तक सवाल है इस वक्त रनों का, तो रन इस वक्त नहीं मिलेंगे और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर। और गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। अजय गेंदबाजी शुरू करते हुए, विल्सन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, ड्राइव करते हैं इस वक्त कवर पॉइंट की दिशा में और 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल और 1 रन के 7 रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। 1 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनके पारी का इस वक्त प्रगति पर। निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतर शुरुआत की ज़रूरत है। जहाँ तक लक्ष्य तक पहुँचने का सवाल है, 33 रनों का लक्ष्य, 33 द टारगेट फॉर अरसू वॉरियर्स। और धनुष इस बीच लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद थी और आखिरकार गेंद को मोड़ने के प्रयास में चूंकि वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 2 रनों पर। अजय गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं और इस बीच विल्सन अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार था। इन हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद स्वीप कर दिया मिड विकेट पर, रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, लेकिन इस बार थ्रो को थोड़ी देर से विकेटों पर लगाए उन्होंने बैकहैंड के जरिए और 1 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 2 रनों पर। 2 on the board, 3 on the board in fact, in the over number first in progress. This is the match number 6 of this prestigious cricket tournament. Attavara Premier League Season 7 2026 is now progressing here. और जहाँ तक 7वें मैच का सवाल है, just talking about the 7th match. Good day, Bulls will take over Kinna Warriors in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart and also complete the toss procedure before the end of this match. Kinna Warriors ಹಾಗೂ ಗುಡ್ ಡೇ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಟಗಾರರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಕೂಡಲೇ। और इस बीच ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया इनटू द गैप एज वेल, गेंद का पीछा करते हैं फील्डर, लेकिन गेंद तक पहुंचने में असफल और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ विल्सन के बल्ले से और इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर। 7 ऑन द बोर्ड। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट मंगलुरु मीडिया द्वारा इस वक्त किया जाता हुआ जनाब कमल अहमद इनके सारथ्य में। और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, तो जय इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ के दिशा में, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद, स्वीपर आउट देयर, ही जस्ट गॉट अ सिंगल एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 8 on the board in the over number first in progress. Still a ball left in this over और जय गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए लेग स्टंप से बाहर और ओवर की समाप्ति। फर्स्ट ओवर completed and after first over 8 on the board. Pretty good start for Russo Warriors, chasing the victory target of 33 in 5 overs. Now 25 to get in remaining 24 deliveries. That means in remaining 4 overs with a required run rate of exactly 6.25 runs per over. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗುಡ್ ಡೇ ಬುಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಿನ್ನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಗುಡ್ ಡೇ ಬುಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಿನ್ನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರದ ನಂತರ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೂಡಲೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗುಡ್ ಡೇ ಬುಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಿನ್ನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ धनुष गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और विल्सन सामना करने के लिए तैयार। 25 टू गेट फ्रॉम 24 डिलीवरीज और ओवर की पहली गेंद लेकर धनुष गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए हल्के से गेंद को टैप कर दिया, खूबसूरती के साथ गेंद को बीट करते हुए निकले इस वक्त फील्डर को, और गेंद को जब तक बैकअप किया जाता दी बैकअप थर्ड मैन पर बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त कट किया था, स्क्वायर ऑफ द विकेट, और आखिरकार 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 10 रनों पर। 10 ऑन द बोर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गेंद पहुंची और 1 रन का इजाफा हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 11 रनों पर। 11 ऑन द बोर्ड इन द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर और इस बीच गेंदबाज
धनुष अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार था, इन्हें हाथों पर था विकेट। ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त, और जहां तक सवाल है रनों का तो रन इस वक्त नहीं मिलेंगे। स्कोर रुक चुका है 11 रनों पर, दूसरा ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। और धनुष अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा, दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सपना करते हुए इस वक्त धनुष इस बार गेंद को उछाला, दमदार स्ट्रोक, लेकिन यहाँ पर गेंद टकरा चुकी है अंपायर को। दुर्भाग्यवशात स्ट्रोक इस वक्त टकरा चुकी है अंपायर को, और सिर्फ एक मात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ, और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 12 रनों पर। 12 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। Off the toes, flicks it away down to a fine leg for a single, and with that single run the scoreboard moving up to 13 for the loss of no wicket in the open number second in progress. This is the second last match of the day one of this prestigious cricket tournament. Attavara Premier League Season 7 2026 is now progressing here between Arasu Warriors versus SKB Cricketers. और SB धनुष गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार ऑन साइड पर गेंद शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, नॉन सेकंड बल्लेबाज काफी आगे निकला है, रनआउट का खतरा, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित। और जहां तक रनों का सवाल है, रन इस वक्त नहीं मिलेंगे। तो दोनों अंपायर इस वक्त कुछ बातचीत यहां पर करते हुए 13 रनों पर स्कोर बोर्ड इस वक्त रुक चुका है। और इस वक्त एक अंपायर प्लेयर्स पेविलियन की ओर इस वक्त बढ़ते हुए, कमेंटेटर बॉक्स की ओर इस वक्त बढ़ते हुए, वाइड है या नहीं ये परखने के लिए अंपायर सुरेश मुड़बेद्री, अंपायर रोलन पिंटो इस वक्त फील्ड पर मौजूद, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। मैच नंबर 6 ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट, एंड Attavara Premier League celebrating their 14th year, and because of that 14th year celebration they are organizing this fantastic cricket tournament in the name of Attavara Premier League Season 7 2026. और ये श्रृंखला, ये टूर्नामेंट एक बेहतरीन, एक शानदार प्रगति करती हुई इस एम्बेकरे के मैदान पर। वाइड बॉल इज द कॉल, और एक रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, टीम को मिलेगा। जस्ट अ सिंगल रन एडेड टू द टोटल, एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 14 for the loss of no wicket in the over number second in progress. विल्सन और धनुष एक बेहतर शुरुआत अपनी टीम को देने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए, और कुल मिलाकर एक गेंद धनुष के ओवर का अभी भी बाकी। तो इस बीच धनुष अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को पुल कर दिया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद सीमा रेखा को इस वक्त पार कर चुकी है या नहीं देखना पड़ेगा, अंपायर के इशारे के इंतजार है। और जहां तक सवाल है, इस वक्त काफी उम्दा गेंद को उछाला था, काफी ऊंचा उछाला था, शायद गेंद वहां पर वृक्ष पर टकरा चुकी है, जरूर वहां पर कुछ हुआ है। और यहाँ पर अंपायर कमेंटेटर बॉक्स की ओर इशारा कर चुके हैं कि 6 रन है या चौका ये देखने के लिए। ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಗುರುತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅದರ ವಾರಸುದಾರರು ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವಂತೆ. ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ವಾರಸುದಾರರು ಅದರ ಗುರುತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. सो छक्का या चौका ये परखने के लिए इस वक्त so 6 declared it, and what a fantastic struck came from the bat of Dhanush this time. And with that 6, the scoreboard is now rising up to 20 on the board. They are looking in a commanding situation. और 2 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका, 2 overs completed, 20 without loss. Now just 13 to get for victory in remaining 3 overs. और गेंदबाज first ball off Sadi, off stump, wanted to cut that one, missing the line completely,
एंड कलेक्टेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। निश्चित रूप से बेहतरीन स्ट्रोक था इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर सीमा रेखा के बाहर पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर जो धनुष ने लगाया था। और गेंदबाज अपनी ओर के अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई फील्डर गेंद को फील्ड करते हुए स्वीपर आउट दैट जस्ट अ सिंगल ही गॉट एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 21 on the board in the over number third in progress. Third started just short while ago in their innings. बल्लेबाज अपने जूते के फीते को इस वक्त बांधने के बाद सामना करने के लिए तैयार विल्सन और अश्विक गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को खेल दिया। विल्सन ने एक्स्ट्रा कवर पर थ्रो पहुंचा और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। जोखिम भरा रन चुराना चाहता, भुगतान यहां पर करना पड़ा और विल्सन इससे पहले के नॉन स्ट्राइकर पर पहुंचे सीधा थ्रो पहुंचता हुआ एक्स्ट्रा कवर फील्डर का गेंदबाज के हाथों में। गेंदबाज ने तेजी के साथ विकेट चटका दिए। फर्स्ट विकेट गॉन। विल्सन डिपार्ट्स आफ्टर प्लेइंग अ गुड इनिंग्स फॉर देयर साइड एंड फर्स्ट विकेट लॉस फॉर Arasu Warriors. It's 21 for 1. Wilson departs. So Wilson scored a fantastic 16 runs. Well built knock came to end from him. 16 runs he scored, including one massive 6. And he's back into pavilion. Nazir, the new batsman, is now comes out to the middle. और अश्वित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट तैयार। 3 बेहतर गेंद इस ओवर में गेंदबाज फेंक चुके हैं और अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। नजीर इस वक्त सामना करते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद इस वक्त गेंदबाज तैयार। टॉप है जब मौका हो सकता है। एक्स्ट्रा कवर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए जी नहीं, गेंद को लपकने में सफल हो चुके। जी हाँ, इस कैच को यहाँ पर लपका गया है खूबसूरती के साथ डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर द्वारा। और अजय जो फील्डर थे डीप एक्स्ट्रा कवर पर दौड़ते हुए आखिरकार गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखी और निश्चित रूप से ये बेहतरीन कैच इस वक्त कहलाएगा जो डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर अजय ने इस वक्त लपका है। तो दोनों अंपायर इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए और जहाँ तक सवाल है इस वक्त देखना है कि क्या निर्धार वो देते हैं आपस में बातचीत करने के बाद अंपायर्स। तो इस वक्त तीसरे अंपायर के लिए मांग की गई है कि ये गेंद को लपकते समय फील्डर का शरीर का कोई अंग सीमा रेखा को टकरा चुका था या नहीं, ये परखने के लिए। और तीसरे अंपायर एक बार फिर से यहाँ पर कमेंटेटर बॉक्स पर आते हुए इसकी जांच करने के लिए।
He's gone, in fact. Fantastically held by the fielder just inside the fence at deep extra cover. और इस कैच के बदौलत इस बेहतरीन कैच के बदौलत ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है और विकेट नंबर 2 इस वक्त गिरता हुआ और एक बेहतरीन नंबर इस वक्त अश्वित का इस वक्त प्रगति पर. Number 4 batsman is now comes out to the middle wearing number 23 jersey. The scoreboard stays at 21 and what a fantastic over progressing here from the bowler Ashwita. 4 fantastic deliveries bowled by him in this over. 14 गेंदें बाकी और 12 रन चाहिए इस वक्त और नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर उनका आगमन होता हुआ और गेंदबाज अश्वित इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार. न्यू बैट्समैन नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और इस वक्त तो सपना करते हुए इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया. मिड विकेट पर गेंद जाते फीडर गेंद तक पहुंचते हुए एक रन बल्लेबाज को मिलेगा. जस्ट अ सिंगल ही गॉट एंड विद अ सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट नाउ. 11 रन्स मोर रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 13 डिलीवरीज. स्टिल द मैच इज इन बैलेंस. कम बैक करने के लिए 4-5 लगातार डॉट गेंदे और विकेटों की दरकार यहाँ पर गेंदबाजों को एसकेबी क्रिकेटर्स के और इस बीच अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ कवर के दिशा में गेंद जाते हुए एक रन बल्लेबाज को मिलेगा. क्लीन पिकअप नॉट मोर देन अ सिंगल. स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड 3 overs had been bowled. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬುಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಿನ್ನ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಡೆ ಬುಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಿನ್ನ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟಾಸ್ प्रोसीजर. और अंतिम ओवर का खेल इस वक्त शुरू माफ कीजिए चौथे ओवर का खेल इस वक्त शुरू होता हुआ. द पेनल्टीमेट ओवर ऑफ द इनिंग्स इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट और गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए और गेंदबाज इस वक्त तैयार. किरण गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए 12 गेंदें बाकी 10 रन चाहिए और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. गुड डे क्रिकेटर्स आर वॉन्ट द टॉस इन द नेक्स्ट मैच एंड व्हाट द डिसीजन दे विल टेक जस्ट वी हैव टू वेट एंड सी. और किरण ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिना तो ओवर द विकेट लेग स्टंप से बाहर क्विक पेस ऑफ विकेट कीपिंग लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद. डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ चुका है. 11 गेंदें बाकी और 10 रन चाहिए अब विजय के लिए. द टाइड इज नाउ स्लोली टर्निंग और जहां तक सवाल है इस वक्त 10 रनों का तो देखते हैं अगली गेंद पर बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाज यहां पर अपनाते हैं रन्स बटोरने के लिए. और डॉट गेंद इस वक्त खेल चुके हैं बल्लेबाज नजीर और अपने ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार. अंपायर विकेटों को सही करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए और इस बीच गेंदबाज अगली गेंद इस बार बेहतर गेंद. फैंटास्टिक वन. 2 consecutive डॉट बॉल. आई थिंक इज गॉट अ निक ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट. जिस तरीके से हताश मनोभावना विकेट कीपर के चेहरे पर दिखाई थी उससे यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ था. बैट और बॉल का संपर्क हुआ था. तो इस वक्त डॉट गेंद 10 of 10. रोशनी मैदान पर काफी हद तक कम हो चुकी है और इस बीच गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिना तो द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त गेंद को इस वक्त खेलना चाहा. गेंद वहीं पर रुक गई है. रन के दिस टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन. 2 लगातार गेंदें खेलने के बाद निश्चित रूप से दबाव बल्लेबाज के ऊपर दिखाई दे रहा था नजीर के लिए. इस बार गेंद को बिना देखे रन चुराने की हड़बड़ाहट उन्होंने की और विकेट कीपर ने अपना काम तमाम किया. विकेटों के पीछे थ्रो को रिसीव करने के बाद नजीर डिपार्ट्स एंड नाउ द टाइड इज नाउ टर्न्ड. आई थिंक सो. 10 runs to get from remaining 90 deliveries. Absolutely fantastic battle is now continuing here under this prestigious cricket tournament at Attavara Premier League season 7 2026. New batsman number 5 batsman is now comes out to the middle wearing a number 13 jersey. और वो इस वक्त क्रीज पर
कदम बढ़ाते हुए 3 फैंटास्टिक डिलीवरी बॉल बाय द बॉलर किरण इन दिस ओवर और अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार था दाहिने हाथों पर द विकेट स्वीप कर दिया इस वक्त गेंद को गेंद जाती फाइन लेके दिशा में 1 डिक्लेयर्ड इट एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 24 on the board. That means 9 to get in remaining 8 deliveries. What a match is now progressing here. In the last few deliveries, a fantastic comeback made by the bowlers of SKB cricketers, and because of that, they are now back in the game. Now, the match is now equally balanced. और गेंदबाज इस वक्त तैयार किरण गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार 9 to get from 8 balls. तो इस वक्त अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद विकेट शॉट फाइन लेग फील्डर चुके हैं वाइड के रूप में 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे couple of runs now added to their total gifted runs couple of gifted runs added to their total now 26 Arun Pradeep, the batsman, 7 runs to get from 7 balls. 8 balls, in fact. 8 balls remaining, 7 runs to get. और गेंदबाज इस वक्त तैयार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए किरण दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार ये गेंद इस वक्त प्रदीप just wanted to push that one missing the line completely off stump uprooted. And the bells are disturbed and the batsman has to depart. Pradeep is gone. Now the equation stands 7 of 7 balls. 7 गेंदे बाकी 7 रन चाहिए प्रदीप जो बल्लेबाज थे रक्षात्मक तरीके से ढकेलना चाहते थे एक्स्ट्रा भी करके थोड़ी सी उछाल लेते हुए बल्ले को चीरती हुई सीधे ऑफ स्टंप को उखाड़ कर ले गए बेल्स डिस्टर्ब हुए और इसी के साथ प्रदीप की पारी पर पर्दा गिर चुका नए बल्लेबाज अनुभवी खिलाड़ी इस वक्त रसू वॉरियर्स के लिए अरुण क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए 7 गेंदों में 7 रनों की दरकार और अरुण का आगमन इस वक्त होता हुआ is now going to face the bowling of Kiran 7 of 7 still they have to score for victory और इस ओवर में अंतिम बार किरण बेहतर और अब तक उनका साबित हो चुका अरुण के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार इस ओवर में अंतिम बार अरुण जो कि इस वक्त सामना करते हुए द लास्ट बॉल इन दिस ओवर इज नाउ कमिंग अप फ्रॉम किरण टू अरुण right arm over the wicket here he bowls this time driven that one by Arun down to extra cover in fact he's just got a single सिर्फ एक मात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा so single and Arun keeps the strike and 4 overs has been game 27 for 4 after completion of 4 overs last over remaining 6 runs to get from remaining 6 deliveries still they got 6 wickets in hand 6-6-6 का सीक्वल इस वक्त दिखाई देता हुआ 6 गेंदें बाकी है 6 रन बनाने 6 विकेटें सुरक्षित हैं और 3 छक्कों का सीक्वल इस वक्त दिखाई देता हुआ और जहां तक सवाल है मैच निर्धारित ओवर लेकर गेंदबाज नंबर 18 की जर्सी पहने हुए गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए रवि गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए और अरुण जो कि सामना करने के लिए तैयार रहा ओवर की पहले गेंद 6 runs to get from 6 deliveries still I must say it could be anybody's game in this situation और दर्शक काफी खामोशी के साथ मैच का आनंद यहाँ पर लेते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर रवि इस वक्त तैयार अरुण के लिए दाहिना तो पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अरुण के लिए चूके विकेट कीपर गेंद को लपकने में सफल अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड कर चुके हैं डॉट गेंद अब 5 गेंदें बाकी 6 रन चाहिए 6 to get from 5 balls 5 for tie 6 for win और पहली बेहतर गेंद इस वक्त गेंदबाज रवि इस वक्त फेंक चुके अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अरुण इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और ये गेंद अरुण के लिए एक बार फिर सिलेक्शन से बाहर फाइनल फील्डर के हाथों में गेंद 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा ओवर थ्रो लेकिन बल्लेबाज को दूसरा रन नहीं मिलेगा वाइड का इशारा वाइड का इशारा हो चुका इन वाइड के रन के साथ अब एक बार समीकरण फिर से आसान होता हुआ 5 गेंदें बाकी 4 रन चाहिए 4 to get from 5 deliveries
And the batsman Rakesh is now back on strike. और इस बीच रवि गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया गेंदबाजी सीधी मिड ऑफ पर आसान सा रन आउट होता हुआ नॉन स्ट्राइक रन पर अरुण की पारी समाप्त अब एक बार फिर से मैच बराबरी पर आकर रुक चुका है 4 balls remaining and 4 runs still they have to score for victory. What a fantastic match is now progressing here. 5th wicket down and 4 to get from 4 deliveries. रक्षित का आगमन होता 1 रन सेकंड पर और इस बीच गेंदबाज रवि अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दबाव इस वक्त दोनों टीमों के ऊपर साफ बढ़ता दिखाई देता वह विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है और गेंदबाज इस बीच रवि अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार और ये गेंद इस वक्त इसका इस गेंद को उछाल दिया है गेंद एक्स्ट्रा कवर पर सीधे फील्डर के हाथों में गेंद पहुंच चुकी है नॉट फाइंड्स द गैप एज वेल and a deep extra cover fielder took the catch successfully. Once again the tide turns. At one step before 2 deliveries, 4 needed from 5 balls, and now after 2 delivery, 4 needed from 3 balls. तो 2 बेहतर गेंदें इस वक्त गेंदबाज रवि फेंक चुके हैं और आखिरकार ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त अब इक्वेशन कुछ हद तक कठिन 3 for tie, 4 for win, and now just 3 balls left in Arasu Warriors innings. नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता वंपायर ने इशारा किया कि देयर एग्जिट्स द टाइम लिमिट तो खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा और जहां तक वक्त का सवाल है शाम के 5:20 यहां पर बज चुके हैं धूप मैदान से बिल्कुल गायब हो चुकी है लगभग बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है लेकिन क्रिकेट के लिए एक पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर इस वक्त भी छा चुका है इससे ढलते हुए शाम में 3 गेंदें बाकी 4 रन चाहिए और गेंदबाज रवि इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए सोनल और इस बीच रवि सोनल के लिए अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर विकेट ये गेंद चुके डॉट डिलीवरी नाउ equation seems to be a stiffer now for the batting side 4 to get from remaining 2 deliveries. What a fantastic comeback made by the bowler Ravi in the last 4 deliveries. And now 4 to get from 2 balls, 3 for tie, 4 for win. और गेंदबाज इस वक्त तैयार रवि फील्डिंग का मुआयना करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज सोनल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और रवि की गेंद सोनल के लिए ड्राइव कर दिया इस वक्त गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर की दिशा में misjudgment and it's gone over the fence for a boundary. This is an absolutely misjudgment made by the long off fielder. और लॉन्ग ऑफ के फील्डर दौड़ कर आए थे गेंद पर लेकिन अंतिम क्षण में गेंद की लाइन को समझ नहीं पाए गेंद कुछ हद तक टर्न लेते हुए और जब तक फील्डर संभलते हैं गेंद उनके दाईं ओर से निकलती हुई उनको बीट करती हुई सीमा रेखा को पार कर चुकी थी लॉन्ग ऑफ पर चौके के लिए तो जहां पर 1 रन मिलना चाहिए था वहां पर फील्डर की गलती की वजह से चौका मिलता हुआ और इस वक्त इस चौके के साथ अरसू वॉरियर्स रजिस्टर्ड अ थ्रिलिंग विक्ट्री in the second last ball of the match against SKB cricketers because of that misjudgment made by the fielder at Vaidish Longoff. A little fielder made the misjudgment at Longoff and because of that Rasu registered a thrilling victory in the second last ball of the match and they won the match by 4 wickets against SKB cricketers and they backed the complete points. What a fantastic match came to an end. The 5th match of this prestigious cricket tournament, Attavara Premier League Season 7 2026 has been came to an. Now, match number 7 and the last match of the day 1 of this prestigious cricket tournament is now going to start between Good Day Bulls versus Kinna Warriors. And that match starts within just short while. Like छोटा सा ब्रेक लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आज अंतिम बार for the last time today मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब यहाँ पर किन्ना वॉरियर्स और गुड डे बुल्स का मैच नंबर 7 शुरू होगा आज का अंतिम मैच है तो अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक थैंक यू धन्यवाद
Welcome back once again. Opening batters already came into the middle. Raghu. Akhilesh and Raghu, the opening batters for team Kinna Warriors. And Kinna Warriors yet to open the account in the points table. It's a very important match. Both the teams lost the 2 matches respectively, so that it is going to be a very good contest between these two. And how well they're going to open the accounts in the points table. Here comes the first over. Prajwal bowls outside the line of off stump and by call by umpire. And extra to combine the first run for the team Kinna Warriors. 1 without loss of any wicket. Raghu, the batter, and experienced campaigner. But unfortunately, their team couldn't manage to open the accounts in a points table. Even the team Good Day. Good Day Bulls. Nice looking drive towards the deep long off boundary for 4 runs. Fantastic placement and even better timing. Just leaning into the drive. Timing is exquisite in dedication. Just using the pace of the bowler. And you know exactly this is a power play over. Raghu dispatched that one imperious extra cover drive for 4 runs. With that boundary score, moves on to 5 on the board for no loss. Prajwal once again couldn't manage to contain the boundaries. Time is exactly 5:25 in the evening. Almost dark, which is covering the ground. Again using his feet. This time protection is there in the deep long on region. Nice pick there from Raghu. Walking down the track and played it beautifully for easy single. And score moves on to 6 on the board for no wicket. Akhilesh, the batter, will going to take the strike. Round the wicket, right arm. Balls outside the line, stump going to be a wide, 1 more extra. This is where the Good Day Bulls have to be very careful. And they are also wanted to win this match in the last league stage match. 1 more extra. Scuba moves on to 7 on the board. One more wide, 1 more extra. Prajwal only looking towards getting some extra pace in the bowling, but he bowls a wide. 1 more extra. Scuba now moves on to 8 on the board for no loss. A good start for the Kinna Warriors. Prajwal right arm round the wicket. Bowled him, cleaned him up. This time right on the money, right on the block hold. Akhilesh just tried to hit that one across the line. Pays the penalty for that. The quicker and faster one right on the block hold. The wicket number first gone. It's 8 for 1. Akhilesh departs. Shishant is a new batter in. Experienced campaigner, technically very sound player. A good all-rounder for the side of Kinna Warriors. Prajwal strongly back in this over with a lovely Yorker and delivery. Round the wicket, right arm. Oh, beautifully balled. Wicketkeeper Prasad done a wonderful job behind the stump. Uprooted the stumps in a fraction of a second. The better delivery to bowl to the fresh leg as they bowled some extra pace and extra bounce in the negation there for Prajwal. No runs scored.
8 for 1. The power play over is in progress. Time is exactly 5:30 in the evening. You're watching the match number 7 of day number 1 of prestigious Attavara Premier League 2026. Sri Durga Friends Attavara representing their 7th edition in this MA cricket ground. Lofted fielder is underneath it, taken at deep extra cover. Wicket number 2 gone of team Kinna Warriors. And 8 for 2. The worries continues here for the Kinna Warriors after completion of first over. So Ritvik brought it attack to ball the second over to Raghu. Raghu lofted and Sunil is underneath it. One more big fish in the net. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement. Being the experienced batter, Raghu knows that where the fielder is when you're taking that stroke. In the evening, it's not so easy to get the distance. Raghu departs. Once again, he got a start, but fails to make that one big winnings for his team. And Ritvik strike with a big one for his team. It's 8 for 2. Just number 19. Of course, everyone is a 19. The new batter in. Kavish is the new batter in. Ritvik got a vital breakthrough for his team with the huge wicket of Raghu. Lovely delivery, beautifully bowled. That's all happening when you are getting a wickets. You are always very confident. This is the one delivery. It's good enough for the new batter. Just angling away from the right-hand batter. Completely missed out. Wicket keeper behind the slam did the rest back to bowler. It's 8 for 3. One more lovely delivery. Wicket keeper missed it. By call by umpire. One more excellent delivery indeed. That's 9 for the loss of 3 wicket. Very good bowling continues here by Ritvik so far. 9 for 3. Ritvik again. Nicely driven down to long off. Sunil the fielder. Slight bit of fumble from the fielder, but quickly recovered by Sunil. Only a single with that single score, but moves on to double figure. 10 for 3 in the over number second is in progress. So far, it's a good over in progress.
The 4 deliveries he bowled in this over, picked up a wicket and just a couple of runs, one in the form of bye. Atul will going to take the strike. Nicely plays it down to point region for a single. With that single scored, moves on to 11 on the board for the loss of 3 wickets in the over number second is in progress. The last time in this over, the bowler Ritik will going to continue from the road end. Oh, Spectra wide. All the efforts are gone in vain. But Ritvik to ball that one delivery. Have to re-ball, but couple of runs with a bonus for the team Kinna Warriors. 13 for 3 now. Sometimes bowlers are making a mistake after getting a very good start. Played it gently down to point region. Good cricket from the batter. Kavish will going to retain the strike. 14 on the board after completion of over number 2. And 7 runs per over. Run rate progressing for the Kinna Warriors. The last 3 overs remaining in their innings. Both the teams desperately wanted to win the match. If you wanted to remain the competition, 14 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 14. Bowler brought into attack to bowl the third over. Puneet himself came into attack to bowl the third over to the right-hander batter Kavish. Akshay and Puneet, one of the 2 pillars of this cricket tournament, as playing for same team. Puneet to ball, played it nicely into the point region for a single. Both are playing a good cricket, sensible cricket from these 2 batters. Not really try to hit it too hard, but just placing the ball here and there, just keeping an eye on the rotation of strike. It's 15 for the loss of 3 wicket. Puneet. Again, this is the one area the team Good Devils really make a lot of hard work, extras, which is really helping the team to get into that track. 16 for 3. Ball him, clean him up. Atul just wanted to play that one into the offside region. But a huge gap between bat and pad. Puneet strikes with a beautiful delivery. The wicket number 4 gone. It's 16 for 4 now. Kinna Warriors. The worries continues here for worries. The Shreyas is a new batter. Walks towards the middle. The cloudy weather condition, overcast weather condition, even the time is 5 past 40 in the evening. Shreyas will going to take the strike. Puneet strikes in the previous delivery with an excellent off-cutter. Coming into the batter. Puneet to continue. Outside line of off stump and a white call by umpire. One more extra. $17 for 4.
Swept it very nicely into the fine leg region. And the ball will go in towards declared area. 1D1 run, quite unfortunate for batter Shreyas. They went into the declared area. And scoreboard now moves on to 18 for the loss of 4 wicket in the over number third is in progress. Good sweep shot there from Shreyas. I request the fielding team to kind request to make it past some chances of rain. The black clouds already covered the blue skies. Possibility of rain. Reverse shape effectively played for just single. Not that much of opportunity behind the stump. One more single. Mm, 19 on the board. Slower one, change of phase, lovely delivery. Wicket keeper missed it. Just a ball, he missing the stump. Not too far away from the stumps. Lovely delivery there from Puneet. Scoreboard stays on 19. Puneet to continue. Again, lovely reverse sweep. Once again, declared areas. Just a single. With the addition of that single, scoreboard now moves on to 20. 3 overs gone. It's 20 for the loss of 4 wickets. Kinna Warriors. Last 2 overs remaining. Sachin brought into attack. Kavish will be the striker. Starts with the wide. It's a 21 on the board for the loss of 3 wickets, 4 wickets. Sachin to continue. Left arm around the wicket. Second wide of this over. This is what why the Good Bulls are fails to win the match. This is where they need to be a very disciplined bowling. Back-to-back 2 wide deliveries from Sunil. Left it and a gap towards the deep extra cover region for a single. With the addition of that single, scoreboard moves on to 23 on the board for the loss of 4 wicket in the over number 4 is in progress. Shreyas back on strike. Reverse sweep is attempted, but umpire not interested. Leg by call by umpire. One more extra in the form of leg by 24. Good comeback by Sunil. After that, back-to-back 2 wide deliveries. A lovely one. Good line in the negation. One more dot ball. Sunil to continue. 24, 25 now. Third wide of this over. It's a 25. One more lovely delivery. Played it down to square leg region. They were looking for the second. In comes a throw from the fielder. Pick up and throw. And looks like the batter is in trouble. Now we're going for the third umpire. Shreyas looks like is safe or not. Just wait and see.
So strong breeze is coming and into the ground now. He's gone. Shreyas back in the pavilion. He's run out. He's short of his crease. The bat is in the air. And good work done by the bowler Sachin. After receiving the throw, he done a very good work, quick work. Shreyas departs. Pratham is the new batter in. 26 on the board in the over number 4 is in progress. Couple of deliveries left in this over. Pratham, new batter in the non-striker's hand. Kavish will go into face. Sachin, left arm round the wicket. Bowler's back dry. No run scored. Dot ball. 26 for the loss of 5 wickets back in the pavilion. Drives that one nicely into the deep long on region. One more single, 27. Over number 4 completed. Last over remaining. So 27 for 5. Kinna Warriors. The last over remaining. Bowler. Mushad the bowler. In our online scoring department, we have a gentleman, Muchit, and cameraman, Mr. Pradeep. In Ashpak in our technical department as the operator. That starts with a wide. Mushad bowls a wide. 28 on the board. Anas, one more cameraman for Mangalore Media, did a wonderful job for the day number 1. Nicely one down to deep extra cover region. Only a single. With the addition of that single, score moves on to 29 for the loss of 5 wicket. Last 5 deliveries left, and the left-hand batsman is on strike now. Pratham. Strong breeze is passing in the middle of the ground. Definitely the left-hand batsman will go into enjoy this condition where the wind is flowing towards the commentary box. Mushad. Mushad to Pratham. Balled him around the legs. Tried to play against the line. And Pratham departs. One more wicket back in the pavilion of Kinna Warriors. The worries continues. The new batter in is Charan. Mushad strikes with a beautiful delivery. And just 4 more deliveries left, and scoreboard 29 for the loss of 6 wickets. Mushad. Right arm over the wicket, balls. Full toss, lofted, and fielder underneath it. One more wicket back in the pavilion. Wicket number 7 gone. And 29 for 7. The over number last is in progress. Last 3 deliveries left. Santu walks towards the middle. Now Mushad will go in to try for the hat-trick. So far, no hat-trick in this day number 1 of Attavara Premier League 2026, which is proudly presented by Sri Durga
friends. Attavara, Mushad. This time he's looking for a hat trick, but he bowls a wide. And 30 on the board. Mushad to Santosh. Played it nicely into the mid-wicket region. Fumble for fielder, one day single, 31 on the board. The last couple of deliveries remaining. Umpire says exceeds the time limits. The Good Bulls have to bring one fielder inside the ring for the couple of deliveries. The opportunity for the batter to take the advantage, Kavish. Kavish to face Mushad. Lofted, eye up in the air, and misjudgment for the fielder, not really trying for the catch. But couple of runs completed. The ball is in there for a long time. But the fielder couldn't manage to trying for the catch, and a couple of runs completed. 33 for 7. Last ball of their innings. Oh, this is second time ball hitting the umpire. And just a single. And that's it. 34 now total score. 35 to win this match for Good Day Bulls in their 5 overs. 30 ball, 35 needed for Good Day Bulls to get their first victory. And Kinna Warriors also, they have to restrict their opposition to get their first victory. So this is going to be a very good competition for the last match of this day number 1. To wait and see how well both the teams will go into the battle for the victory. Changing the commentary box, I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone. Thank you. .35 the target. धन्यवाद सतीश. So the last session of the day number 1 of this prestigious cricket tournament, Attavara Premier League season 7 2026 is now going to start. 35 the target. 35 the target for Good Day Bulls set by Kinna Warriors. They have to score 35 out of their 36 deliveries. First ball of the innings is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ इस वक्त रनों की शुरुआत यहाँ पर हो चुके हैं. 1 रन पे लाके से नुकसान के, और इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार
गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए सुशांत दाहिने हाथों पर द विकेट। इस वक्त ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया, गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, कोई फीडर वहां पर नहीं, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, एक रन प्राप्त करने में सफल और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर। 2 ऑन द बोर्ड या 2 लूज एनी विकेट के ऊपर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। शाम के 6 इस वक्त बचते हुए, अगर ठीक तरह से कहा जाए तो 5:55। इट्स ऑलरेडी 5:55 इन द इवनिंग और गेंदबाज इस वक्त फील्ड पे कुछ हद तक जमावट करते हुए सुशांत इस वक्त गेंदबाजी करेंगे अक्षय के लिए, जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार सुशांत की गेंदों का। और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। इस बार गेंद को उछाला, स्क्वायर ऑफ द विकेट। अक्षय ने खूबसूरती के साथ कवर पॉइंट की दिशा में गेंद बढ़ती है और गेंद इस वक्त डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर जब तक रोक ली जाए। काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का। खूबसूरत स्ट्रोक इस वक्त, गेंद को इस वक्त मोड़ दिया था, स्क्वायर ऑफ द विकेट उछाल दिया था पावर ब्रेक का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज अक्षय ने, और 3 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। और इन 3 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर, जबकि पहला ओवर उनके पारी का इस वक्त प्रगति पर 35 रनों का लक्ष्य। और सुशांत ये गेंद चिप किया खूबसूरती के साथ, नाइस कवर ड्राइव, गेंद पहुंचे एक्स्ट्रा कवर पर, जस्ट सिंगल ही गॉट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर। 6 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। निस्संदेह बेहतर शुरुआत की जरूरत इस वक्त गुड्डे बुल्स के सलामी बल्लेबाजों का, उन्होंने 35 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना जो किन्ना वॉरियर्स ने इस वक्त तय किया इस मैच नंबर 7 में, इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट। This time chipped away, just clearing the infield this time. Fielder chasing it. They completed 1, they come back for the second. और 2 रन, जो कि बड़ा रन डायरेक्ट हिट इस वक्त लग चुका है, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा अंतिम क्षण में मैं समझता हूँ इस वक्त अंपायर का कोई इशारा नहीं, बल्लेबाज 2 रन यहाँ पर पुट कर चुके हैं। कपल ऑफ रन एडेड टू द टोटल एंड विद दैट कपल रन द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 8 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। This is the 7th and the last match of the day 1 of this prestigious cricket tournament. Attavara Premier League season 7-2026 is now progressing here. सुशांत अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त, 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार। 5th time in this over, सुशांत bowls right arm over the wicket। यह गेंद बल्ले का बाहरी किनारा थर्ड मैन की दिशा में, 1 declared it और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर। 9 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और सुशांत इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए 14 मैचेस इस श्रृंखला में खेले जाएंगे, सेमीफाइनल और फाइनल को शामिल करके 7वां मैच इस वक्त प्रगति पर। इस बार गेंद को उछाला, लेकिन फील्डर वहां पर कोई भी मौजूद नहीं, लेकिन गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया। थोड़ा सा स्क्वायर मौजूद थे, फील्डर बेहतर फील्डिंग, जस्ट सिंगल ही गॉट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 2 अंकों पर। Pretty good start for Good Bulls. 10 on the board after completion of first over, chasing the victory target of 35 in 5 overs. Now the equation straight away coming down to exactly 6.25 runs per over, 25 to get from remaining 24 deliveries. That means in remaining 4 overs. रघु जो कि किन्ना वॉरियर्स के ट्रम्प कार्ड गेंदबाजी पर इस वक्त उतरते हुए एक बेहतर ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। First ball of the second over of Good Bulls innings is now coming up. Still some fielding adjustments is going on there और बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अक्षय। रघु फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज अक्षय और काफी तेज हवा मैदान पर गुजरती हुई। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, इस वक्त ओवर की पहली गेंद लेकर रघु इस वक्त तैयार। Just wanted to cut that one, missing the line completely. Good start for Raghu in the bowling department. Dot delivery और स्कोर इस वक्त रुक चुका 10 रनों पर
और फिर से एक बार रघु गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट तैयार। इस बार गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली। इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल शॉर्ट पॉइंट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर। 11 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए रघु और सामना करेंगे इस वक्त किशन। हर गेंद के साथ फील्डिंग में बदलाव लाते हुए लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जो कि क्रीज पर इस वक्त मौजूद है। और रघु अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज किशन के लिए अगली गेंद। Break that one gently down to extra cover for a single। 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट इस वक्त कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 12 रन एंड अक्षय बैक ऑन स्ट्राइक। रघु गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए मैदान पर रोशनी काफ़ी हद तक इस वक्त कम हो चुकी है, लगभग अंधेरा सा छाता हुआ। शाम के ठीक 6 बज चुके। इट्स एग्जैक्टली 6 PM इन द इवनिंग, 6 o'clock इन द इवनिंग। और आज का अंतिम मैच का द्वितीयार्ध, द सेकंड सेशन ऑफ द लास्ट मैच इस वक्त प्रोग्रेस करता हुआ। ये गेंद ऑफ से बाहर थर्ड मैन की दिशा में जाते हुए 1 रन का इजाफा, बाई का इशारा अंपायर द्वारा और 22 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर। 13 ऑन द बोर्ड। ये टूलूजन ने विकेट, हल्की सी हवा, हल्की सी नहीं ज़्यादा तेज़ हवा कहना पड़ेगा मैदान की बाईं से दाईं और इस वक्त गुजरती हुई। जिस तरह मैदान के कचड़े और धूल इस वक्त उड़ रहे हैं उसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हवा का रुख मैदान की बाईं से दाईं और है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इस बीच रघु अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए किशन के लिए अगली गेंद। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद और शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर ने बेहतर तरीके से गेंद को रोका इस बीच। और जहाँ तक रनों का सवाल है, रन से इस वक्त नहीं मिलेंगे। गेंद कुछ ज़्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे। सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा। रघु एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद ऑफ द टोस, गेंद को स्कूप किया इस वक्त मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर मौजूद। पहले टिप के बाद आफ्टर फर्स्ट पॉइंट गेंद को कलेक्ट करने में सफल और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। फैंटास्टिक ओवर केम फ्रॉम रघु, जस्ट कंसीडर्ड 4 runs in this over and after 2 overs still the equal battle is now on। 14 without loss, that means 21 to get in remaining 18 deliveries for Good Day Bulls in this situation against Kinna Warriors। तो इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर प्रारंभ करते हुए और जहाँ तक सवाल है इस वक्त अखिलेश गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए मैदान के सीमा रेखा के पास जो बत्तियां लाइट्स है, खंबे के लाइट्स, वो इस वक्त जल चुके हैं और निश्चित रूप से इस वक्त दिन धीरे धीरे अंधेरे की ओर, रात की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ। काफी तेज हवा इस वक्त चलती हुई। पहली गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा किशन ने, चूके और गेंद इस वक्त 1 रन मिलेगा जरूर, लेग बाय के रूप में पूर्ण करने में सफल और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर। 15 विदाउट लॉस। काफी तेज हवा मैदान पर इस वक्त उठती हुई और धूल मिट्टी इस वक्त उठते हुए और खेले जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। अखिलेश
गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अखिलेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार इस वक्त अक्षय के लिए फ्लाइटेड लॉफ्टेड इस वक्त गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे आते स्वयं गेंदबाज और इस कैच को लपकने में सफल। ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करने में सफल और टॉपेज पर टकराई और गेंदबाज अखिलेश ने अपने फॉलो थ्रू में आते हुए इस कैच को एक बेहतर जजमेंट के साथ लपकने में सफल। अक्षय डिपार्ट्स, फर्स्ट विकेट लॉस्ट फॉर गुड डे बुल्स। नाउ इट्स 15 for 1. अविनाश, the number 3 batsman is now comes out to the middle और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा अखिलेश की गेंदों का। अगली गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया इस वक्त स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, एक रन मिल चुका है, 1 declared it and with that single run the scoreboard moving up to 16 on the board for losing 1 wicket. Still 19 more runs now they have to score for victory और 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज अखिलेश फेंक चुके हैं और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करते हुए किशन और अविनाश माफ कीजिए सामना करने के लिए तैयार। एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज तो शायद उनकी आंखों में कुछ कचरा इस वक्त जा चुका है, तो विकेट कीपर से कहते हुए कि आंख को थोड़ा सा फूके और उस कचरे को हवा के जरिए निकालें और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार गेंद को उछाला लंगॉन के दिशा में, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, 2 रन प्राप्त करने में सफल। बेहतर से वहां पर करते हुए फील्डर बेहतर फील्डिंग और इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ 2 रन मिल चुका है, माफ कीजिए, कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल 18 for the loss of 1 wicket. 2.4 overs bowled in there, still 2.2 have to come and 17 more runs to get for in remaining 14 deliveries. मौका विकेट कीपर के हाथों में गेंद, एक और विकेट गिर चुका है। अविनाश की पारी समाप्त, उछालना चाहता, मिडल ऑफ द बैट कलेक्शन नहीं, गेंद हवा में उछली और विकेट कीपर ने विकेटों के पीछे बेहतर तरीके से इस गेंद को लपक लिया अपने दोनों हाथों में। नाउ द थर्ड विकेट फॉलन, 2.5 overs had been bowled, 18 for the loss of 2 wickets. Avinash departs. Puneet, the new batsman, is now comes out to the middle as a number 4 batsman, and this critical circumstances for good day Bulls. और वो इस वक्त सामना करते हुए अखिलेश की गेंदों का, और अखिलेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाह, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली, इन फैक्ट दे लुकिंग फॉर द सेकंड एंड दिस टाइम दे वोंट गेट इट एंड जस्ट अ सिंगल दे गॉट। 19 ರನ್, 19 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. 3 overs completed, 19 on the board, 16 runs to get from remaining 12 balls. 12 गेंदें बाकी, 16 रन चाहिए विजय के लिए। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए
This is the seventh match of this prestigious cricket tournament. Attavara Premier League Season 7 2026 is now progressing here. काफ़ी लंबी बातचीत इस वक्त चलती हुई खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए. तो मैदान पर इस वक्त बिजली खड़कती हुई और निश्चित रूप से जो आवाज़ें इस वक्त सुनाई दे रहे हैं, जो आवाज़ बिजली की इस वक्त सुनाई दे रही है, लाइटनिंग, और वो बिजली की आवाज़ इस बात का पूर्वाभास है कि वर्षा इस वक्त कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाली है. और इस बीच गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए कुमार ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, और बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए पुनीत. 12 balls 16 runs required. First ball of his fresh over is now coming up. This time just gone for a big one, not succeeded, and up goes the finger from umpire. Plumb in front given, and this time is gone. In fact, Avinash, in fact Puneet has to depart, and one more wicket fallen. Like before wicket, it's 19 for the loss of 3 wickets. Now 11 balls left, 16 runs required. The match is now still in balance. तो इस वक्त गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ताइना तो बढ़ता हुआ फुल टॉस ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, बैकवर्ड सुकॉल लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. फुल टॉस गेंद थी और ऐसा कहना पड़ेगा he swept it well and finds the gap as well between deep backward square leg fence for a boundary. और निर्णायक मौके पर ये चौका लग चुका है इस वक्त बल्लेबाज के जरिए. Now the equation stands 10 balls remaining, 12 runs to get. इसाक जो बल्लेबाज थे जिन्होंने गेंद को खूबसूरती के साथ इस वक्त मोड़ दिया था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर. 10 गेंदें बाकी, 12 रन चाहिए. 12 runs to get from remaining 10 balls. गेंदबाज कुमार, गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इसाक के लिए फुल टॉस. इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा बीमर गेंद, नो बॉल का इशारा. नाउ द टाइड इज नाउ स्लोली टर्निंग. 11 to get from 10 deliveries and a free hit delivery for the batsman. फ्री हिट गेंद बल्लेबाज के लिए. और इस बीच गेंदबाज ये गेंद चूंकि इस वक्त पैरों पर टकराई, इस वक्त विकेटें उखाड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा अंतिम क्षण में विकेट कीपर ने उखाड़े थे, लेकिन बल्लेबाज शायद यहाँ पर बच चुके हैं. तो यहाँ पर वर्षा होते हुए और कुल मिलाकर इस वक्त गेंदें बाकी है 9 और रन चाहिए इस वक्त 11. 11 runs to get from 9 balls. 9 balls left, 11 runs required, and the match is now stopped for a while. It's already 6:15 in the evening, and now still 9 balls left in the overall calculation in their innings.